So good evening everyone. So आमे आज ठो इकोनॉमी रो क्लास स्टार्ट करिवा. So आम संगे अच्छे वैष्णव सर जे कि इकोनॉमिक्स उपरे ऑलरेडी बुक्स लिखी एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया रे दिल्ली रे सर पढ़ाउछंती आईएएस इंस्टीट्यूशन रे पढ़ाउछंती आंध्रा रे आमेर विजयवाड़ा रे पढ़ाउछंती आसाम रे पढ़ाउछंती सर एमबीए भी कंप्लीट करिछंती एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे एबे हमर सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे सर जो पिला माननकु सिविल सर्विस में सिविल सर्विस रो ये पिला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे सर पढ़ाउछंती. सो मोर देन हमर सर सर आमे कंबाइनली पढ़ाउथुल आगुरु अन एकेडमी रे पढ़ाउथुल से बेटू चिन्हा जे एंड हमर प्रीवियस बैच रे सर दीटा बैच पिला को हमर पढ़ाइछंती इकोनॉमी पढ़ाइछंती. सो फिजिक्स वाला रे सर पढ़ाउछंती दिल्ली रे भी पढ़ाउथले. सो पर्टिकुलरली सिविल सर्विस जदि देखिबा टोटल सिविल सर्विस प्रिपरेशन पाई सर पूरा इकोनॉमिक्स हो एथिक्स हो एंड डिफरेंट सब्जेक्ट उपरे सर ऑलरेडी माने पढ़ाउछंती. सो आमे सर माने इकोनॉमिक्स जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स सर हमको केते इजी वे रे हे परिबो पढ़ेबे एंड आमर जो कोर्सटा एबे रहिबो आमे करिबा पर्टिकुलरली आमे ट्राई करिबा कि मॉर्निंग टाइम रे करिया पई हमर एबे जो पूरा वीकटा जक हमर मॉर्निंग टाइम रे चलिबो तो जोटा कि सकाळ आमे ट्राई करिबा 8टा रु स्टार्ट करिबा बाय 10:30 10 सुधा आमे एटा करिया पई कारण बहुत पिला दूर रु जो माने आछंती पुरी रु से आछंती तेनु टिके प्रॉब्लम होची जो माने टिके दूर रु आछंती ट्राई करिबा आमे एई वीकटा सारंकर जो इकोनॉमी पूरा इकोनॉमी रहिबो एंड सार इकोनॉमी हमर सेटा को पढ़ी चलिबा. ओके सो जो मैंने ऑनलाइन जॉइन कर आम ऑडिबल से वॉइस आसूची ना आसुनी येस नो गोटे थर येस नो कह दियो देन विल स्टार्ट. पछ एसीटा टी ऑन करनो नहीं रिमोट गरम लगुच कहीं तले थी मान दे सेटअप करदेवी चलिए कबूल painter. Okay, so thank you all. Very good evening to all of you. Nice meeting with you, and it's my pleasure to have a great session with you all. I have already taken so many batches with Kalinga IAS. Other than that, I have taught so many batches across India. I have taught in different institutions in Delhi and other parts of the country, especially for government administrative staff college, Assam, Bangalore, Hyderabad, so many institutes. But currently, I am focusing on physics wala, and I'm a guest faculty in Central University of Odisha, catering to both civil service aspirants and management students. I have written so many books, but Indian economy is one of my most you can say flagship, most demanded books among the books I have authored. Indian economy, which was sold in Delhi, different bookstores and in online also, but that was written in 2015, long back. It is not updated. It was published, but very simple, concise handbook on Indian economy. But as far as economics is concerned, the subject is concerned, this paper has been taught by me several times. Most of the institutions, it is coincidentally they call me whenever I join for other courses, for other subjects. Coincidentally, or by you can say chance, I am accidentally allowed or told to teach economy, Indian economy.
So that was my interest area. Plus, I was most of the time invited for teaching economics. And economics by default, it in all the batches, if you attend all the classes with utmost sincerity, utmost discipline, that means commitment, whatever the class decorum, if you maintain and you listen to my lectures with attentive, that means with your 100% that concentration, then definitely it will yield not only good result, 100% you will get all the questions in this class. Because why I am telling, it's not my, it is time tested series. If I tell you economics, you start from the scratch zero. You don't know what is economy, what is economics, what is Indian economy, what is economic development. Even students from PG, they have done PG in economics, but they see this exam requires a different approach. This exam does not test the academic knowledge. This exam tests your analytical mindset, your thought process, your presentation skill, your interdisciplinary approach towards a particular area or subject or discipline or any particular domain. How you basically deal with the particular subject. No question, no subject can be studied in isolation for UPSC, understand, or OPSC for that matter, because syllabus is same. Whenever I am talking you about UPSC means you refer to synonym is OPSC, because previously the trend was different, syllabus was different. Nowadays, State Public Service Commission and Union Public Service Commission, they have similar pattern, but you will find the degree of difficulty, the degree of that you can say the complexity varies from state to Union Public Service Commission, because if you see, you are analytical, your question, you will face the analytical question. At the same time, UPSC also asks analytical question, but the degree of angle means the way they are asking little bit, if you said moderate level, there is a difficult higher level, like that. Difficulty level increases to some extent, UPSC, and more contemporary aspects. They test your knowledge related to contemporary social issues, contemporary events, contemporary happenings, whatever is happening, how can we link with those happenings in your traditional subject knowledge. So economics, it is not economics, it is not good or right to say that we are studying economics. We are studying what? Which subject? What is your syllabus? First of all, why I am highlighting this? I have taken earlier batches, I have so many slides, so many PPTs, but this particular syllabus I have developed PPT. I have taken so much time just to give you a mind map of the syllabus. You will see that, sir, we can get it from the internet. You can scan the internet, you can go and check. Nowhere you will find this particular mapping or syllabus. You may find this is given, but the design that we have done, the way we have presented, it's different, unique, and absolutely complete, unique of its own kind, one of its. So what is my question? What you are going to study in civil service? All you are preparing for civil service. Before that, I have told you something about, because I think sir has introduced about me. So that's brief introduction about me. Slowly you get to know about me if you come in contact through the classes. Okay, that means if you attend my classes, you will get to know about me more, you will be acquainted with me, because no need to again tell about my credentials or my academics. First of all, I would like to know about you, your educational background, because just this is a class is a composition of heterogeneous backgrounds. It's not a what you can say is common all BA or BCom, BSc or BTech students. There are master degree, there are bachelors, there are different domains. So I would like to know the composition of the class first, your introduction, then we'll go with, this is the very first class. Don't be panic, you can ask many questions. I can also translate it into Odia. I know Odia, I speak Odia, I am Odia, but I will use mostly in English in my class, because delivery, I take all, my approach is that I am confined to Odisha particular, I am not, though I am teaching for OPSC. My target, because I always use that, you are the Indians, you are preparing for all type of exams. Odia will speak,
will tell if you don't understand. But I will try to first know about your, where are you from and what is your name and what is your educational background. These three things I would like to know about you. Please start. बताओ. Sit and speak, no issues. हाँ बोलो. My name is Sir. I am from Bhubaneswar. I completed my graduation from Bhubaneswar in chemistry. Which chemistry honors? Okay. Means BSc in chemistry. Okay. Sit. Tell. Physics honors. Okay. Chemistry, physics. I completed my graduation from Aspirants College. What is your subject? Physics honors. Okay. I completed my graduation in botany. Botany. Myself, Regina Behra from Odisha. I have completed my graduation Bhubaneswar College in Education Honors. After I take B.Ed from Bhubaneswar College of Teacher Education. Your education honors and B.Ed. Okay, qualification. Now I am working as a graduate teacher for a Teacher. Next is Priyanka Sani. I am from Jagatpur. I have completed my graduation in history. Which college? History. SBM. Jaspur. Jagatsinghpur. Okay. Which literature? English literature from which college? Dhenkanal. Okay. BA. Highest qualification. Okay. Next. बताओ. Geology. Good. बताओ. Good evening, sir. Good evening, everyone. I am Deepak and I am from Bhubaneswar. And I am from background Bachelor's in Fishery Sciences from UPSC. Bachelor in? Fisheries. Fisheries. Okay. Good. I am Deepak. I am from Odisha. I have completed my graduation in chemistry. Chemistry honors. Okay. Sir, I am Deepak. I have completed my graduation from in English honors from Women's College Sambalpur, and I had also completed my masters in English honors in OCS College or Bhubaneswar. Master in subject? Sir, English. BA English, Master English. My name is I am from Puri. I completed my graduation from Deepak Women's College with English honors. Okay. Okay. Myself, I am from Bhubaneswar. I have completed my graduation from Deepak College in Economics. Next. I have completed my education in political and engineering from Rajasthan College. Okay. Which honors? Data science. Bhadrakot knows data science honors. Okay, they have started recently. Or very okay. Data science, good subject. Which college? DAV. Which subject? Computer science. Physics honors. BSc. I have completed my BSc in Zoology from Prelims. Zoology or geology? Zoology. Okay. Good evening, sir. Myself, I am from Cuttack and I completed my graduation from Nagara Autonomous in Zoology honors. Zoology honors. So most of you are from science background. Okay, and very few have BTech or technique, data science, or as I said, computer science background, and some English literature background. Nobody is from economics background. I think you are from economics, BA economics or masters. Graduation. Which college? BJP college. Okay.
So you have done graduation in economics. Dekho, why you am asking, just know the composition of the class, because it will give you a idea that this is, we are studying economy, it is social science subject. We are, but our background is core science, physical science, or some other subjects, computer science or engineering background. Then what is, how will grasp this? You are totally blank with this subject. You don't know what is actually economics. Even you don't know what the subject is all about. What I will start, what I will study, what I will not study. The daunting task. The most, economics is not tough. It is little bit technical. Economics is not tough, but little bit technical. When I say technical, it is not again technical. It requires some understanding of terms, terminologies, conceptualization of the facts, understanding certain basic terms. If you understand the term, you can have actually first hand, you have some knowledge, you can write something, and you can add on some other informations once you read it. But if you don't know what is GDP, even if you mug up, if you economics cannot be learnt by, cannot be studied by rote learning. You simple mug up, simple cram, simple, you will memorize the facts and you can represent in the exam, reproduce in the exam. It will not work out. So what is most important that UPSC or civil service exam requires, the trait is must have a lateral, what is lateral thinking? Lateral. You should have a lateral thinking as to, you should always ask what is, not only what is the GDP, if GDP is something, how it impacts, how and why GDP is always discussed, highlighted, why not other things, how GDP affects, why it affects, and what. So you must ask, you should have that conceptual clarity first. In economics requires strong hold of concepts. You should master the concept. If you master the, it is not history. Again, most of the subject require mastering the concepts. First concept, build the concept. Then you can add many things, or you can enrich that subject. You can write anything. You can, whenever the question is twisted, whenever they ask different question, because questions are not coming directly, they are asking just in a present, in a contextual manner. In the contextual manner means when some events occur, when something happens, how it related to that. For example, sustainable development goals. So what is sustainable development goal, and why some Indian states are lagging behind achieving these goals? What are the blockades or laggards, or what are the blockades, or what are the hindrances? What are the blockades which affecting, or which are acting as a blockade or hindrance, barrier in achieving these goals? So many things you can write only when you know the what is sustainable development goal. Forget what is sustainable. You don't know. Even if I ask you, you have read, but you cannot say what is sustainable. So okay, so you first understand what is the syllabus, what we have to study. Okay, have you seen the syllabus in which paper? Economics is coming under which paper? It's a portion subject under which paper as per the UPSC mentioned or OPSC mentioned? कौन सा part में आता है भाई? Paper 4, sorry 3. Paper 3 is, paper 4 is ethics. Paper 3 economy, science and tech, internal security, disaster management, etc. etc. But among all these portions, the topics or the subjects, economy has a core significance, has a greater, you can say, more weightage. Acha, is that English, whatever I am telling you, is that understood? If you don't understand, if there is some technical jargon, if there is some gap, you can ask me. I can again start speaking in Odia or Hindi. But first of all, it's very easy. Economics is a part of your GS paper 3. It is not economics. Written is economic development. Economic development. Economic development. The written, what is written in? Economic development. This is the syllabus, understand. Why they have written this? They should have written economics. Most of people, the students or the aspirants, they
do this mistake. They study many things, but they don't find it useful when it comes to exam. They don't clear prelims, they don't clear mains because of some lack of understanding about the syllabus. First, you should map the syllabus. You should know what is being asked, what is the trend, what is the pattern that civil service exam follows. Accordingly, you have to follow. Na? You cannot design your own way or course of action. You have to tailor make. You have to tailor make, or you have to fine tune your strategy as per the UPSC or OPSC demands as their requirement. So, economic development is the syllabus. So, now if you say GS paper 3, now you told. So, what are the topics you have to cover under economic portion section segment? What are the topics? Any idea? Because you should always map the, it should be in your fingertip, it should be in your mind. Ki syllabus without seeing, you can tell. Because whenever you read newspaper, you can simply say, okay, this portion is important, this is related to my area, I have to focus on this particular news or current affairs section. So, what are the topics mentioned? Mentioned पूछ रहा हूँ. I am not asking you, you tell. Again, that syllabus is not comprehensive. Comprehensive means simple by following that syllabus. What you have to cover under that syllabus, that is also not clearly mentioned. So, what is the topics given? Anyone can tell what are the topics mentioned in the UPSC syllabus? Their website, UPSC website, if you see, or any online platform, see UPSC GS paper 4. What is the topics? What are the topics you have to cover? Please tell me. If you know, any idea? You can brainstorm. Tell, be fast. But कुछ बताओ, कुछ any idea about the topics given? लिखा है planning, resource mobilization, inclusive growth, okay, related to employment, poverty, ये सब लिखा है. Land, I am not telling about that, I am just telling about simply land reforms, infrastructure, investment models, ये सब लिखा है. Inclusive growth issues arising out of it. Just 8-9 topics they have written. Agriculture, subsidies, MSP, PDS, agricultural, E-Tech, that is technology in the aid of farmers, that is called what you can say, electronic method of doing, or e-medium, simple e-aid to the farmer. Electronic means, or technology aid, technological aid, technological changes occurring in the field of agriculture, irrigation system, PDS, yes, these are mentioned. But that is again very obscure. Again, if you say inclusive growth, what I will study in inclusive growth? You don't know what is inclusive growth because you don't know what is growth first. They have written inclusive growth, but you don't know what is growth. They have written inclusive growth. They have written human development. You don't know what is growth and development. So many things are there you have to cover. So, by looking at the trends from the very beginning, what are the most probable topics? What are the most probable topics? What are the most important topics I have to focus for my exam, for civil service? What are the important topics you have to follow? So, what are the important topics? Anything else? What are the important topics you have to follow? So, if I say first is fundamental, basics of economics, introduction to economy. The first chapter is introduction to economy. What is introduction to economy? Where you have to know the basic terms, concepts like key definitions of different things. What are the sectors of economy? You can write the syllabus. What are the syllabus? First is introduction to economy. First is what? Introduction to economy. I have to study. First is introduction to economy. In introduction part, you should know that is core concepts of economics. Introduction part first. देखो introduction में क्या होता है? Key definitions. Definition. If I say what is economics? What is economics? What is economy? What is economy? What is economy? And what is the difference between economy and economics? बताओ.
Are they same or different? There is difference. We will study that, but I am just giving that overall snapshot of the syllabus. We will start from the very first. So introduction and economics and economy. ये क्या है? Sectors of economy. What are the sectors of economy? What are the sectors of economy? We have to cover. What are the sectors? What are the sectors and types of economies? Types of economies. Types of economies means types of economies, not economics. Types of economies. Types of economics भी there है. What are the types of economics? Micro, macro is of economics. Again, there is another type. So, ये सब in the first part we have to cover, and role of the state, role of the scope of economics, micro, macro, ये सब. And what are the state functions of the state in the economy, and what are the types of economic system. ये जो types of economic system, that is types of economies. Economic क्या हो सकता है types? एक है socialist economy, socialist you know, socialist. One is capitalist. Like this, we have mixed. So you have to first is you have to know the core concepts. Like this, you have to cover. Ki what is economy? What is economics? What are the basic sectors of economy? Okay. What are the types of economies? What are the types of economics? Micro, macro. So we have to start know from the very first. Okay. What is this? What are the fundamental concepts of economy? Every year you will find actually 15 questions. Average, if you see, 15 questions asked in prelims. Sometimes 13, sometimes 16. Average. Last, if you see the 10 years, 15 questions means 30 marks. So 30 marks you will get in the prelims itself. If you include current affairs, you may get more marks, or you may get more questions from this particular. Because everything, anything that occurs around your, anything that happens around you is either economic or political, or interplay of both the things. Because economy also affects polity. Polity affects your economy. You know or don't know? Economy affects polity or not? If your GDP, your GDP is growing, or your economy is doing good, that means your political stability, there is a stability, political stability is there, politics is robust, your political system is robust, your politics working efficiently. You know, if a country where polity is weak, economy cannot be strong. Give an example. Polity is weak, economy cannot be strong. Even if you have good resource, you have more, your development is discounted if your political stability is not there, or your politics is weak. If you have more resource, still you are not developed. Why? Because your political system is not developed. So who is the driver of economics? Politics is the driver of economics. Who manages the economy? Who runs the economy? Politics. So it depends on the dynamics of politics, which will determine the level of growth and development. You see the America, politics is strong, economy is strong. You see the India, okay, Japan, छोटा country, very small. Japan does not have any natural resource, but despite having very less or negligible natural resource, they are developed because of robust political, vibrant political scenario or setup, or leaders qualities, the leadership. Japan, dekho. Small countries, they are well developed because of their political system. But you see the Iraq, Iran, Saudi Arabia, they have more resource, petroleum rich countries, but still they are underdeveloped. Their per capita income is high because population, but their per capita, if you see education level, health wise, gender empowerment, sustainability, they are not doing good in all these dimensions. So politics, economics run simultaneously. If politics is not strong, even if you have a good economy, it will collapse or it will fall down. That happens. One day it will fall. If your political mechanism is not working properly. Okay, so this is what first is, this is the first introduction. I told you introduction. Next, what you have to study?
Growth, development, second, growth, development and happiness. Growth, development and happiness. This is the first. Then growth, development and happiness. What is it? Clean. Why it's not a clean? नहीं आ रहा ये तो third second why second is not I think second is somewhere huh? Undo ये huh? No. Growth, development and happiness. Second, देखो, this is not in order again. This is not in order. You cannot say you will study after this. I am telling these are the topics you have to cover. Growth, development and happiness. Growth and development happiness क्या है? What you have studied in growth, development, happiness? Where you have to contrast between GDP and HDI. देखो, GDP is what? Growth. GDP is growth. But development is, GDP does not measure development. GDP, can GDP measure development? Why it cannot measure? It is not a measure of development. Why it is not a measure of development, or why it cannot measure your development? Because it is GDP, you know, income. Simple, GDP is income of the country. If income of the country is more, why you are not developed? That means there are other parameters, other indicators, other aspects which are considered or crucial for development. GDP is not the sole indicator for development. It's one of the indicators. One of the indicators. There are other parameters, other social indicators which are used for measuring development. Development is a socio-economic well-being. Development is socio-economic well-being or social well-being of the it tracks the social parameters. But GDP is just an economic indicator. GDP is not a social indicator. GDP is economic well-being. GDP is only economic good, or you say you are poor or rich based on your income. But I cannot say your health is good or bad. Based on the income, I cannot decide whether you are free from any disease. You may have more income, but despite having more income, you may be suffering from some chronic diseases. That happens. So then, income cannot track, measure the development. So we have to study this growth, development. Again, happiness. Why happiness we are studying? These are the topics. Happiness again. Happiness is another dimension, another index, which is World Happiness Report. This is World Happiness Report. Since 2012, it is being published by Sustainable Development Solutions Network. World. Yes, happiness as an index. Happiness is an index which is being measured since 2012 by UN body, that is called SDSN. Okay, you don't know what is this. First, happiness again is another dimension we need to study. Before we are thinking that growth is equal to development, but after 1990, particularly 90s, it was believed that growth is not equal to development. Why? Okay. So happiness is what? Happiness is another construct or another dimension which you have to measure. So happiness, growth, development and happiness we have to study. In this, you can see all these things we have just study. We'll study slowly. Okay. So growth, development and happiness. So next part is, I think you have to clean selection. Selection next. Indian economy, planning and evolution. Indian economic planning and evolution.
Indian economic planning and evolution. That means growth. In growth, what you study? GDP, national income, we have to cover. Then development, HDI, etc. we have to cover. I am not writing here, it is given, okay. Then economic planning and evolution, what you have to cover? In economic planning, what you have to cover? What you will cover? Planning era, 5-year plans, planning commission was there, but now, so journey from pre-independence to Niti Aayog, okay. Pre-independence till Niti Aayog formation, and after Niti Aayog, the role of Niti Aayog in cooperative federalism, role of Niti Aayog in decentralization, grassroots development. What then basically planning Niti ये सब पढ़ना है. You have to study all these things under this chapter. Indian economic planning and evolution में you have to study evolution of Indian economy. Basically pre-British era, post-British. Pre-British में क्या हुआ था? Before Britishers came, what was the condition of Indian economy? And during Britishers rule, what was the economic condition of India? And after Britishers left, or Indian economy on the eve of independence, when Britishers left, what was the condition of India? And now what is the present characteristics of Indian economy? So basically features of Indian economy, and we have to cover economic planning, evolution of Indian economy, etc. Okay, any doubt? Till this you have any query or any, because I have not studied anything. Just I am giving the sketch of your syllabus topics you have to cover, focus, or you can study, you can emphasize these topics, because you are totally unaware of the topics you have to cover or give more focus for this particular exam, right? So evolution of Indian economy. Indian economy is evolved slowly from a agrarian socialist state controlled economy to a market based economy and capitalist, or you can say to a service led growth, to a service led economy. Now we are registering more income from which sector? We are getting more income from which sector? Service sector. But 1950s you are getting more income from agriculture. So from agrarian economy to a service led economy, from a socialist state controlled economy to a market based economy. Now government is controlling all the sectors, or government is having control over very few, or you can say who is controlling more in economy, Indian economy? Private or government has more control? Basically economic activities are controlled by economic activities. I am not telling about law and order, not talking about defense, not talking about social sector. I am telling the main economic activities are controlled by which? Private or government? You see, economic activities means what? Producing goods. I have not yet told you the definition even economics. Economics is what? Production, distribution, ये सब है. But I am telling the where good is produced, service is generated, or service is created, the value is created, production takes place. So either good or service. This is a part of your economic activity. If you produce something, it is a part of your economics. That production may be in terms of good or in terms of service. Production not necessarily in terms of physical good. Production may occur whatever, when I am telling you, I am giving you service, that is a production. Production definition means addition or creation of utility. Addition of value is production. Creation of utility is production. You add something to the existing, you produce something. If you don't add, you work, but you don't produce anything, you don't add value to your existing base or your whatever you are. Suppose I told you, you are at this, you are actually, suppose I am telling you, you are plowing a field, plowing, you understood, means cultivating a field, okay. Plowing means cultivating a field. Okay, you cultivate, you used all the things, fertilizer, pesticides, or whatever the ingredients, the raw material you have spent money, everything, but your production is zero, let's say zero. You cannot say ki I have produced something, because your production is zero. Or simply I am telling you, suppose I studied 5 hours, but I did not remember, I did not even
get one information. I cannot tell you, even suppose I gave an exam. I studied 5 hours, I gave a test and my score is 0. So can you say you produced something? You cannot produce. Production takes place only when you add some value. You study 5 hours, that is efficiency again. Suppose she studies 1 hour, she remember 2 things, information. You study 2 hours, you remember 1 thing. She study 1 hour, she remembers 2 things. You study 1 hour, you remember 2 things. Means efficiently, you are more efficient. But production takes place in both the cases. So that efficiency is a different concept. So I'm telling, if you add something to your, that is a production. But in economics, production means addition or creation of utility or value. Utility slash value is production. But we are telling about, so okay. So yes, sir, how economy is evolved over the time from pre-independence to post-independence till current at the present juncture. If you see the features of Indian economy is now a which type of economy? Indian economy is which type of economy now? Mixed economy. What is mixed economy? Both mixed economy था ना यहाँ पर ये what is mixed economy? Here both government and private coexist, or both government sector and private sector work together in production, distribution of goods and services, or in trade and trade of, in all economic activities both government and private participates. But if you see the degree of control, actually degree of control over economic activities, whose control is more, private sector or government sector? Who controls more? Private sector controls economic activities, I am telling. Government acts as a facilitator because we have shifted from a socialist economy or state controlled economy to a market led economy. Now you see here all the economics or economic decisions, economic activities are actually decided by the private sector. You see the airlines, previously only government, now telecom sector. You see the post, India Post was there, now couriers, they are also providing service, na? Buses, transport, earlier government was there, now private transportation is more prevalent than the government. Private is more dominant role playing, in fact, in transportation. Railway also, except Indian Railway, there is a high speed rail jointly operated by private and government. High speed rail, metro rail, there is a private sector stakeholder, private share is there in metro trains. Some airports are run jointly by private and PPP mode, that is public private partnership is there. So both the parties when control the means of production or regulate the economy, that is called a mixed economy. Mixed is nothing but state plus private. State को हम बोलते हैं government, private is market. You can say either way. Private बोल सकते हो, market बोलोगे, government बोलोगे, state बोलोगे, both are same. So ये तो we are talking about कि how economy has evolved over the time. So then we have the topics we have to cover. I am just giving the topics, but I have not started anything yet. Definition also I have not told you what is definition of economy. So economic reforms and liberalizations. इसमें क्या पढ़ना है? Not necessarily in the order. This order I will teach also. I have my own design style, but I am giving you the syllabus. Just and it is in the syllabus we have written some points so that you can link कि मुझे भाई हाँ LPG पढ़ना है. Economic reforms and liberalization. देखो, what is economic reforms? कब start हुआ economic reforms? When it started? 1991 biggest reform, LPG reforms. That we have to study. Liberalization is a part of this economic reform. And liberalization, actually, why it is called LPG? Any one of you? Why it is called LPG? Why it is not called PLG or GPL? L, because in order to privatize, in order to globalize, liberalization is the first step. In order to open your economy, in order to privatize your economy, in order to go global, first step is liberalization. Without liberalization,
You cannot, privatization is not possible. You cannot go global, or globalization is also not possible. That's why it is called liberalization first. So liberalization is the first step for bringing economic reforms. And here we have to show different reforms, like Washington consensus and ये Washington consensus क्या है? Just will I'm just giving you this. LPG era क्या है? Washington consensus focused on government privatization, deregulation. What is deregulation? Removing the restrictions. Previously, economy was regulated. Regulated means tightly controlled, controlled by the government sector. Now, government is freeing the economy. That is removing the restrictions over the economic what activities? Restrictions of what? Private sector. Previously, there were restrictions to enter. Now, it is free to start a business. There is a heavy license. Now, no licensing norms except few industries. Many industries were delicensed, deregulated, privatized. तो ये सब है क्या है? ये सब चीज LPG era start हुआ तो LPG is a part of your syllabus. Means you have to study economic reforms. I am not teaching, I am telling again, focus on the topics. If it is not clear, what is we have to cover? Inflation. Bhai, what is inflation? Inflation कुछ क्या होता है? You know any inflation? Inflation is a scenario of price rise, continuous price rise. तो business cycle क्या है? तो ये पढ़ना है आपको. Inflation business cycle एक part. किस कौन सा इकोनॉमिक्स में? So inflation business cycle में क्या होता है? पहले expansion, then जाएगा peak, then contraction, then जाएगा trough. Trough is the lowest point of economic recession depression का phase है. Trough, then economy recovery होगा, then expansion. इस तरह का जो इकोनॉमिक साइकिल बनता है, इकोनॉमिक का जो फेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फेजेस ऑफ इकोनॉमिक की जो एक्सपांशन कंट्रैक्शन का फेजेस को हम बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल और बिजनेस साइकिल. सो दैट रिलेटेड टू दिस. इसमें बहुत सारा शेप होता है, बहुत सारा एग्जाम पूछता है. डब्ल्यू शेप क्या है, जेड शेप क्या है, वी शेप क्या है, यू शेप क्या है, कोरोना में क्या हुआ था, डब्ल्यू शेप क्या है, ये सब एग्जाम में पूछता है. डिफरेंट शेप्स ऑफ बिजनेस साइकिल. वी शेप होगा तो क्या है, सडन रिकवरी ले रहा है. यू शेप स्लो रिकवरी हो रहा है. डब्ल्यू शेप क्या है, जेड शेप क्या है. So these are also questions directly asked many times. If I say the questions, national income, many times question, who is the father first to start with the calculate national income? Who is the father of economics? So that is a very traditional thing you should know, but that will study. But ये inflation is also part of your syllabus. Inflation पढ़ना है आपको. Next क्या पढ़ना है भाई? Agriculture and food management. Agriculture जो आपका एक agriculture explicitly mentioned in the syllabus. Agriculture and technology, agricultural marketing, irrigation system, cropping pattern, ये सब चीज. तो क्या क्या methods है, क्या challenges? Generally mains answer. In main you will find this type questions asked. कि what are the challenges in agriculture? Directly questions you can write these points. That is also enough. This kind of these topics help you these points to write to develop a mains answer. How you can write the question, how can you approach a question. These are the points. You should know the main points, the crux. Next is policies. क्या है sustainable agriculture? What are the policies adopted by the government of India in order to promote sustainable agriculture? क्या क्या policies चल रहा है? Government क्या कर रहा है sustainability के लिए agriculture? You know, organic farming. Okay, so many like जो Govardhan scheme, so many schemes government of India is launching, promoting solar alternative energy. Okay, so per drop more crop, Kisan ka schemes, many schemes are there. So these schemes are targeted towards achieving sustainable agriculture. Food security, तो ये agriculture food management में जाएगा. यहाँ पर PDS, public distribution system, buffer stock, MSP. We have to cover so many things, but that is again a part of your general, you can say current affairs or general topic हो जाएगा. Agriculture is general topic. It's not a core economics. Agriculture is a sector. Primary sector में आता है ना. When you start. So next is what is industry infrastructure. Next is industry and infrastructure.
इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये क्या है इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर? कि यू नो हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर? हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन इंडियन इकोनॉमी और एनी इकोनॉमी? इकोनॉमी कितना सेक्टर्स होता है? हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर? हाउ मेनी सेक्टर्स? Sectors of economy if you say. What is sectors of economy? Primary और क्या है? Secondary, tertiary और क्या है? और क्या? 3 sectors. There are again additionally quaternary. There is a quaternary. There is a quinary sector. So mainly 3, broadly 3. These 2 are extension of tertiary, nothing but special category of tertiary. Special category of tertiary means first is primary. Why I told you last agriculture? Na? Agriculture comes under which sector? Primary. So you have to know the primary is a part of your sector. Secondary, industry. Infrastructure will also come. Tertiary is your service. You see the tertiary, next it will come service sector. Service आ जाएगा, tertiary sector है ये. तो industry infrastructure you have to cover. Different sectors you have to highlight. Means main sectors क्या क्या चल रहा है. This is current. You can say this is most related to your current affairs rather than core economics. But core economic topic, inflation, business cycle. Again it will come. GDP, national income. HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब आए. तो ओके, तो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, देन वी हैव टू कवर सर्विस सेक्टर. तो ये एक चैप्टर है. नेक्स्ट सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर इज योर टर्शियरी पार्ट. व्हाट इज क्वाटरनरी? क्वाटरनरी क्या है? दिस इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ सर्विस, बट दिस क्वाटरनरी इज हियर. व्हिच सेक्टर इज कॉल्ड क्वाटरनरी सेक्टर? क्वाटरनरी किसको बोलोगे? क्वाटरनरी और क्वीनरी, ये सेक्टर्स. व्हाट आर दीज सेक्टर्स? क्वाटरनरी इज योर इंफॉर्मेशन नॉलेज इकोनॉमी. सिंपल वन वर्ड, की वर्ड, नॉलेज. वेयर नॉलेज इज क्रिएटेड, knowledge is used, that sector is called quaternary. Information and knowledge. The sector where we generate or create information and knowledge, that sector is called quaternary. Anything. तो अब बताओ, I told you the definition और I told you that concept कि भाई information knowledge जहाँ होता है उसको हम बोलते हैं quaternary. तो क्या एक एग्जाम्पल दो आप. You can link with the some examples. IT नहीं जाएगा भैया. IT में इंफॉर्मेशन नॉलेज, हाँ कुछ अगर सॉफ्टवेयर में मिलता है नॉलेज जैसे वो तो IT नहीं, IT तक सर्विस सेक्टर में जाएगा. मीडिया रोल देखो, मीडिया का काम जो है ना वो भी सर्विस सेक्टर है, बट द जॉब ऑफ मीडिया इज टू क्रिएट सम, प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन. तो जो इंफॉर्मेशन क्रिएट हुआ ना इसको बोलते हैं हम क्वाटरनरी सेक्टर. इफ एनी सेक्टर, दिस इज ए सर्विस सेक्टर बट एक स्पेशल कैटेगरी उसको दे दिया. ये पहले नहीं था, कोई ट्रेडिशनल पुराना बुक में भी नहीं मिलेगा कि 5 सेक्टर है. ये थोड़ा न्यू सेक्टर को ये क्लासीफाई किया गया है. इसको क्लासीफाई है कि ये क्वाटरनरी. क्वाटरनरी का मतलब क्या है? ये इंफॉर्मेशन क्रिएट होता है, यहाँ पर नॉलेज क्रिएट होता है. और एजुकेशन वो भी सर्विस सेक्टर है, बट एजुकेशन को हम क्वाटरनरी में क्लासीफाई कर सकते हैं बिकॉज नॉलेज क्रिएट हो रहा है कि नॉलेज इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है. तो क्वीनरी सेक्टर क्या है? क्वीनरी हो आपका, बताओ फिर क्वीनरी क्या है? Have you studied something or have you do know? No. If you know, tell or else okay, no issues. We are just in the initial very nascent, आपका स्टार्टिंग क्लास है. इसमें अगर कोई पैनिक हो जाओगे, अब क्या चल रहा है, क्या पढ़ूंगा, कुछ नहीं पढ़ा हूँ मैं, जस्ट एक बता रहा हूँ. एक जस्ट एक फॉर्मल, इनफॉर्मल बोल सकते हो, एक इंट्रैक्शन, एक ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द सिलेबस, नथिंग एल्स. कुछ नहीं ज्यादा, अभी कुछ नहीं, कोई स्टार्ट नहीं हुआ है. ये ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द टॉपिक्स, हम क्या क्या थोड़ा पढ़ेंगे, ये एक चल रहा है वही इसमें. लेकिन आप पूछ सकते हो कि अब इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू टॉपिक्स सर्विस सेक्टर, और कुछ आपको मन में है कि नहीं सर ये पढ़ना है कि नहीं,
और ये कवर हुआ कि नहीं, यू कैन आस्क मी, यू आर फ्री टू आस्क। सर्विस सेक्टर, नेक्स्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट। देखो भैया, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ना, ये एक एक्सक्लूसिव टॉपिक, एक्सक्लूसिव जो बोलता हूं ना, वो मेंशन किया है उस वेबसाइट में, उसका सिलेबस में, यूपीएससी का वेबसाइट में सिलेबस है, यूपीएससी मेंशन, ये प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है। अब बोलोगे प्रेस्क्राइब्ड तो वो क्या है, वो प्रेस्क्राइब्ड नहीं, वो है इंडिकेटिव होता है, एक इंडिकेशन देगा इंक्लूसिव ग्रोथ। लेकिन आप इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे समझोगे? इंक्लूसिव ग्रोथ समझने के लिए आपको ग्रोथ समझना पड़ेगा, डेवलपमेंट समझना पड़ेगा, फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आप एक्चुअली इसको इंक्लूसिव ग्रोथ भी बोलते हो, लेकिन यहां लिखा है डेवलपमेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ एक कौन सा एग्जाम में आया था यूपीएससी में, कौन सा 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ को हाईलाइट किया, एम्फासाइज किया? तो देखो कैसे क्वेश्चन, इंक्लूसिव ग्रोथ फर्स्ट टाइम कौन सा 5 ईयर प्लान में इसका एजेंडा था कि हम अचीव करेंगे फास्टर इन मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर बाद में ऐड किया सस्टेनेबल, एक 5 ईयर प्लान में ऐड हुआ है सब। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? और इंक्लूसिव ग्रोथ का डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में आया था, व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट आर द चैलेंजेस, हाउ वी कैन अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ। तो एक देखो, एक आंसर को स्ट्रक्चर करने के लिए हम इस तरह का भी पॉइंटर्स को याद कर सकते हैं, वी शुड नो दिस पॉइंट्स। ये इट्स नॉट ए सिलेबस, सिलेबस के बाद देखो कि किस एरियाज, हम एरियाज कहाँ फोकस करेंगे इंक्लूसिव में, अगर पूछूंगा व्हाट आर द एरियाज व्हिच यू हैव टू फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, एजुकेशन। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? सबका साथ सबका विकास, वही है डायलॉग, जो डायलॉग होता है ना, सबका साथ सबका विकास इज नथिंग बट इंक्लूसिव ग्रोथ, इंग्लिश के वो इसका टर्म। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स इंक्लूजन ऑफ ऑल, इंक्लूजन ऑफ ऑल across all dimensions, all sections। जब इंक्लूजन ऑफ ऑल बोला, वहां पर चाइल्ड, एडल्ट आ गया, यूथ आ गया, वुमेन आ गया, फीमेल मेल सब कुछ आ गया, एससी आ गया, एसटी आ गया, सब कम्युनिटी, सब कास्ट, सब रिलीजन इंक्लूडेड है। और अक्रॉस ऑल कैटेगरीज और सेक्टर्स। सिर्फ एग्रीकल्चर डेवलप होगा, बाकी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं होगा, तो इसको इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं बोलोगे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस ऑल शुड ग्रो साइमल्टेनियसली, या ऐसा नहीं कि सब 100 एवरी ग्रोथ शुड बी देयर। तो इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स ग्रोथ रिचेस टू ऑल सेक्शंस, ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस पे जा रहा है, ऑल सेक्टर पे जा रहा है ग्रोथ। ग्रोथ अगर परवेड हो रहा है, ग्रोथ रिचेस टू ऑल सेक्शन, मेल को जा रहा है, फीमेल को जा रहा है, कॉमन रिमोट एरिया को जा रहा है, हिली एरिया को जा रहा है, मेन स्ट्रीम को जा रहा है, कोस्टल एरिया को जा रहा है, मेनलैंड को जा रहा है, सेक्शंस को जा रहा है और सेक्टर को भी जा रहा है। एग्रीकल्चर भी डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्री हो रहा है, फार्मिंग सेक्टर भी डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी डेवलप हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्रीज ग्रोथ होगा, फार्मर्स का ग्रोथ नहीं होगा, तो उसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं। तो दिस आर द, देखो हेल्थ में फोकस करना है, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, सोशल प्रोटेक्शन देना है उनको, इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। तो बहुत डायमेंशन है। तो ये एक चैप्टर हो गया इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट पढ़ोगे वो जो एलपीजी का था, उसी का एक्सटेंशन ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, सब रिलेटेड है। देखो उसमें रिफॉर्म्स को फोकस किया था, जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म, सेकंड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म, थर्ड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म, फोर्थ जनरेशन ऑफ रिफॉर्म, फिफ्थ जनरेशन, वी आर नाउ फिफ्थ जनरेशन ऑफ रिफॉर्म, जहां पर हम फोकस करते हैं आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, machine learning, robotics। In every business, every aspect of your business is impacted by the use of artificial intelligence and robotics and big data। तो उसको जब हम advanced AIT यूज करते हैं, not IT, AIT, AIT is a term, advanced used, और IT जब यूज करते हो एडवांस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसको हम और सेंसर, रोबोट्स ये सब यूज करते हैं। देखो आजकल सब वर्चुअल चैटबॉट्स यूज हो रहा है। पहले एक कस्टमर केयर पर्सन होता था और एक वन मैन और एक पर्सन, बट नाउ एक रोबोट कैन हैंडल योर क्वेरीज और एक वर्चुअल चैटबॉट रहता है, आपको क्वेरीज को एड्रेस करता है। तो ये जब एडवांस एरा में जो टेक्नोलॉजी आता है, और व्हेन वी आर इंडस्ट्री 5.0, वी आर एट द इंडस्ट्री 5.0, जहां पर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस with the use of advanced AIT, advanced tools,
तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन का एरा, ग्लोबलाइजेशन 5.0, अभी ग्लोबलाइजेशन हम 5.0 में 5th फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का डिफरेंट एराज। फिर नेक्स्ट आएगा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड करके। पॉवर्टी क्या है, क्या क्या पॉवर्टी को टाइप्स ऑफ पॉवर्टी है कि नहीं, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, बहुत सारे टाइप्स भी है। क्रोनिक पुअर है और सीजनल पुअर भी है, तो पॉवर्टी का टाइप्स है। और डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी इज, व्हाई इंडिया इज पुअर, बिकॉज इंडियंस, क्वेश्चन था, एक कोट था, इंडिया इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, इंडिया इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, मतलब यू आर पुअर बिकॉज यू आर पुअर। पॉवर्टी इज ए विशियस साइकिल। पॉवर्टी, अगर आप यू आर पुअर बिकॉज यू आर पुअर मीन्स व्हाट, why you are not developed, because you are poor, you cannot invest money in your education or health, you cannot get a good job, again you will be poor, you will be trapped in that cycle, you will be trapped in that cycle, that is called vicious cycle, given by Ragnar Narkse। तो नर्कसे एक थ्योरी दिया था, vicious cycle of poverty। ये vicious cycle of poverty क्या है, a person remains poor if he is poor, if he cannot break the chain of that poverty। आप देख कैसे चेन ब्रेक करोगे, यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन एंड हेल्थ, दैट्स व्हाई यू आर स्टडिंग। सम ऑफ यू आर, मे बी यू आर फ्रॉम नॉट रिच बैकग्राउंड और हैविंग सम, ओके यू आर पुअर, बट इफ यू गेट सिविल सर्विस और एनी गुड जॉब और एनी टॉप लेवल, एक ग्रुप एज पोस्ट और एनी टॉप लेवल पोजिशन, यू सडनली योर पॉवर्टी साइकिल विल बी ब्रोकन। वही बोल रहा है कि इफ यू आर एजुकेटेड, यू आर स्किल्ड, वहां पर स्किल भी आता है, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल, education is linked with the skill, we are always telling about education related to your skill development। Skilled means if you are having certain skills, you are trained with certain skills, you will get a good job। So job मिलेगा, जब employment generate होगा, जब when you will get employment और poverty will, so poverty का बहुत सारा है, cycle है, determinants of poverty क्या है, trends of poverty क्या है, ये सब चीज है। और poverty सबसे बड़ा है, committees है, committees are there to estimate poverty, Tendulkar committee, Rangarajan committee, so many Saxena committee, so many committees are there, Lakadwala committee, like Niti Aayog has also started a report to set up a committee to measure poverty line, but it did not come up with that report। So committees क्या है, poverty क्या है, ये सब पढ़ना है थोड़ा, ओके। तो मीन्स दिस इज ए टॉपिक। तो नेक्स्ट क्या पढ़ना है भाई, सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम फोकस करते हैं। देखो एक इंक्लूसिव ग्रोथ देखा था, इंक्लूसिव ग्रोथ कौन सा 5 ईयर प्लान, वो छोड़ो, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, व्हेन ग्रोथ अकर्स without affecting, without discounting, without to degrading environmental losses, or with minimal or zero environmental losses, growth occurs without affecting environmental degradation, or simply you can say when we adjust the loss of environment and we measure our growth, that it becomes a sustainable growth। That's why we have a concept called green GDP, and green GDP question was asked। So green GDP क्या है, अब पूछेगा, एक बार पूछा था यूपीएससी में, भाई पोटेंशियल जीडीपी क्या है, यूपीएससी दिस क्वेश्चन वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन मेंस, व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी। सो ग्रीन जीडीपी क्या है, केयर इकोनॉमी क्या है, बहुत सारा चीज आ रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, सो मेनी थिंग्स यू विल गेट टू नो। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, केयर इकोनॉमी अभी चल रहा है, आपको सुना होगा, और एक इकोनॉमी आ रहा है ऑरेंज इकोनॉमी, और रिसेंटली कोई न्यूज फ्यूज में सुना होगा ऑरेंज इकोनॉमी, देखो इस तरह पढ़ोगे तो ये सारा चीज क्या है, ग्रीन जीडीपी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जब when we discuss about sustainability, we must consider green GDP rather than simple GDP नहीं है, अब green GDP, green GDP, ओके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी है हमारा, उसको भी देखोगे। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या क्या कितना गोल्स है, 17 गोल्स है, उसका टाइम लाइन क्या है, 2015 से 30 तक है। वो 17 गोल्स में हमारा कौन सा स्टेट, अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में विच स्टेट रैंक 1 जनरली, अब क्या अज्यूम करते हो, कौन सा स्टेट रैंक 1 है,
गुजरात नहीं, केरला है सस्टेनेबिलिटी में। तो इस तरह का केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब कुछ स्टेट्स है। आप देखो तो गोल क्या आता है, इसका इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स पब्लिश्ड बाय SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, वो करता है, उसका इंडेक्स आता है, सब वो चीज देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अनएम्प्लॉयमेंट। वो रिलेटेड है पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर रिलेटेड आर नॉट? इफ यू आर अनएम्प्लॉयड, यू आर पुअर. If you are poor, you will become also unemployed. So both are cause and effect of each other. So poverty and unemployment is also a important topic we have to see. And from civil service point of view, you should know what is unemployment, what are the types of unemployment, causes of unemployment, impact of unemployment, government measures to protect और रिड्यूस दैट अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट लेता है, क्या क्या जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है। जैसे महात्मा गांधी नेशनल MG नरेगा था, अभी तो उसको क्या बोल दिया, भीपजी राम कुछ नेम चेंज कर दिया है। ओके, विकसित भारत ग्राम। तो ये सब जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, आजीविका स्कीम, बहुत सारे स्कीम्स आ रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मेक इन इंडिया। तो ये सब जनरेशन प्रोग्राम्स, उसका लिंक करोगे करंट अफेयर्स में जो स्कीम्स लॉन्च हो रहा है, जिस रिलेटेड स्कीम्स यू कैन लिंक दैट। बट अनएम्प्लॉयमेंट यू शुड नो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इफ यू आस्क यू व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, डू नो व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? अब बताओ, दिस इज ए कंसेप्ट, दिस इज ए कंसेप्ट, दिस इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। इवन यू कैनॉट रिड्यूस दिस, फिक्शनल होगा ही होगा, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या है, व्हाट इज फिक्शनल, व्हाट इज डिसगाइज्ड? डिसगाइज्ड सुना है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये कहां पर होता है, ये क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स, what is disguised unemployment? Where simple, you are working, but without any contribution or no addition to productivity. No productivity, but coming to office. You are working, looking like you are working, but actual contribution is not there. This marginal productivity of labor is zero. इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। फिर देखो इकोनॉमिक सर्वे बजट, ये तो एक बहुत बड़ा पार्ट जानते हो कि नहीं, इकोनॉमिक सर्वे बजट क्या है, इकोनॉमिक सर्वे बजट ये सब आता है कि नहीं एवरी ईयर। तो बजट और सर्वे में क्या होता है, सर्वे इज द, सर्वे और बजट में क्या रिलेशन है, दोनों देखो। पहले सर्वे क्या करेगा, सर्वे इज ए डॉक्यूमेंट, इकोनॉमिक सर्वे इज ए डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, बट इट इज पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, economic service published by which organization? Which ministry? Finance ministry both publish. But economic survey why it is published? Budget तो आ सकता है, economic survey क्या दिखाएगा, state of Indian economy, state। देखो मैं बोलूंगा आपको क्या, पहले में क्यों पूछे, जैसे आपका क्या बैकग्राउंड है, सिंपल, what is your past status, past performance and what is your future prospects, accordingly I will design a budget ना। आप पहले क्या थे, अब क्या करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आई विल से ओके आई वांट टू सेट अप। इकोनॉमिक सर्वे में बेसिकली इज द मिरर, यू कैन से, ये एक गाइड करता है यूनियन बजट को प्रिपेयर करने। इकोनॉमिक सर्वे एक्ट्स एज ए गाइड टॉर्च बियरर फॉर मेकिंग द बजट। कैसे गाइड करेगा, तो अगर आपको टारगेट है कि मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो मेक इन इंडिया के लिए हमको यू हैव टू sanction more funds or we have to increase our allocation for manufacturing, because our economic survey highlights that we will be a manufacturing hub। manufacturing hub करना है आपको, टैलेंट स्किल डेवलपमेंट करना है, तो इस तब जब स्किल डेवलपमेंट आपका फोकस है तब क्या करोगे, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आप अलोकेट करोगे फंड्स। मुझे प्राइमरी स्कूल्स को, एजुकेशन को प्रमोट करना है, तो मुझे क्या करना है, प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए फंड एलोकेशन। फंड एलोकेशन कहां से होगा, बजट।
You know which budget is the important financial document of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर का कितना आपका एक्सपेंडिचर, कितना रेवेन्यू आएगा, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट है। अगर बजट पास नहीं होगा तो गवर्नमेंट को क्या करेगा? रिजाइन देना पड़ता है, पता है कि नहीं? तो गवर्नमेंट बजट अगर पास नहीं होगा तो गवर्नमेंट रिजाइन देगा। तो इसलिए गवर्नमेंट बजट, कौन सा हाउस, which house passes the budget? Only Lok Sabha, because government is formed from the Lok Sabha only. तो लोक सभा में मेजोरिटी पार्टी फ्रॉम द रूलिंग पार्टी का होता है। तो गवर्नमेंट नोज दैट कि बजट अगर राज्यसभा को पावर पर चले जाएगा तो राज्यसभा में नॉट अपोज द बिल और मे नॉट पास द बजट एंड गवर्नमेंट में कोलैप्स। तो इसीलिए लोकसभा का पास ओनली एक्सक्लूसिव पावर टू पास दिस बजट। राज्यसभा कैन डिस्कस बट इट कैनॉट वोट इन बजट सेशन। तो ये एक पॉलिटिकल पार्ट है, एंगल है। तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे, 1 डे बिफोर इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसका बाद बजट। ये 1950 ये कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा इकोनॉमिक सर्वे। 1954 से हम एक कन्वेंशन बनाए कि इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करेंगे, जो कि हमको प्रीकर्सर टू द बजट। एक बजट का एलोकेशन क्या हो रहेगा, बजट किस तरह होगा, दैट इज बेस्ड ऑन योर इकोनॉमिक सर्वे। ओके, तो ये सब देखोगे कंपोनेंट्स, बजट, ये सब आएगा, ये तो डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन मैं बता रहा हूँ टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक 2015 में फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन में, 2014 में हुआ डिक्लेरेशन, 15 में स्टार्ट हुआ। तो ये जो फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन है, UPSC में आया था प्रीलिम्स में, फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन रिलेटेड टू डैश फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का अदर नेम क्या है? ब्रिक्स बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के सिंपल ब्रिक्स का मेंबर नहीं, एडिशन और ए मेंबर। तो करंट अफेयर्स है, इसलिए जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हो आप, काइंडली नोट, मैं तो आपको इस चैप्टर दे दिया, लेकिन मैं तो स्टार्टिंग में क्या पढ़ाऊंगा, पहले बेसिक्स पढ़ाऊंगा, माइक्रो मैक्रो छोटे छोटे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स का, बाद में जाऊंगा नेशनल इनकम, फर्स्ट में जाऊंगा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थोड़ा बेसिक्स क्या रहेगा कि माइक्रो मैक्रो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सोशलिस्ट, ये सब का बाद हम चलेंगे नेशनल इनकम। लेकिन जबकि करंट यू शुड ऑलवेज रीड द न्यूज। जैसे यहाँ से आएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितना मेंबर्स है, हु इज द लेटेस्ट मेंबर, ये सब कोई पूछ सकता है। तो यू शुड नो दैट की कंसेप्ट मल्टीलेटरलिज्म है। ये क्यों बना? टू काउंटर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कंट्री, बेसिकली यूएस। और यूएस का जो इन्फ्लुएंस कहाँ पर ज्यादा है? IMF एंड वर्ल्ड बैंक डोमिनेट करता है। IMF वर्ल्ड बैंक में कौन सा कंट्री? यूएस है। इंडिया इज ए मेंबर, अदर कंट्रीज आर मेंबर, बट दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर राइट्स और शेयर, or they don't have major voice. Their grievances are not actually addressed properly by these international multilateral forums or organizations. So then they created BRICS is a member, regional forum, regional बना दिया ब्लॉक। अब बताए, देखो अब जानते हो रीजनल ग्रुपिंग्स क्रिएट हो रहा है, क्यों किया? मान लीजिए कोई इंडिया में, इंटरनेशनल एरिया में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है? रीजनल ग्रुपिंग। आपको WTO को फॉलो नहीं कर रहा है तो रीजनल ग्रुपिंग अपना ब्रिक्स अपना बना दिया, आसियान, साप्टा, नाफ्टा, ट्रेड एग्रीमेंट्स बना दिया। सो दे आर मेकिंग देयर ओन रीजनल ट्रीटी और एग्रीमेंट और इंस्टीट्यूशंस टू सपोर्ट देयर इकोनॉमीज, मेनली टू सपोर्ट देयर इकोनॉमीज। दे आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट फंड्स फ्रॉम व्हिच कंट्रीज? IMF and World Bank or other like developed countries they are getting. So they created a different institution BRICS like bank, which will fund, which will finance infrastructure development in BRICS countries economies. आपको ये जो NDB, ADB, ये सब बैंक्स फाइनेंस कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कहाँ पर? उड़ीसा हायर एजुकेशन जो एक प्रोग्राम है, उड़ीसा हायर एजुकेशन सपोर्ट कर रहा है, NDB दे रहा है पैसा, ADB वर्ल्ड बैंक भी दिया है। तो वर्ल्ड बैंक इज फंडिंग, अदर बैंक्स, रीजनल बैंक्स आर आल्सो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल। सो ये सब देखना है। इसका साथ और क्या है आपको देखना है कुछ चीज। देखो इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस,
ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस क्या है? वो ब्रिटेन वुड के प्लेस है न्यू हेम्सपायर यूएस में। वहाँ पर क्या हुआ था ना, कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। वो कॉन्फ्रेंस में क्या इमर्ज होकर आ रहा है? दो इंस्टीट्यूशंस इमर्ज हुआ और क्रिएटेड हुआ। वो दो इंस्टीट्यूशन क्या है? आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस। तो ये इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट टैक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो टैक्स स्ट्रक्चर में जीएसटी आप जानते हो बहुत बड़ा रिवाम्प हुआ है टैक्सेशन में। पहले तो था बहुत सारा टैक्स, ये जो जीएसटी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स ना, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्यों इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हो आप इनडायरेक्ट टैक्स? हाउ डू नो इट इनडायरेक्ट टैक्स? आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो ना, बताओ इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो टैक्स आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते, सिंपल। अब देखो, आप इकोनॉमी सोच रहे हो बहुत कॉम्प्लिकेट, आपको आज लग रहा होगा कि बहुत इजी है, फिर जैसे स्टार्ट होगा वो डिफिकल्ट लगेगा जब तक आप क्लियर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि मैं बता रहा हूँ जो कुछ नहीं, बहुत चीज है इसमें। मैं ग्रीन जीडीपी बोल दिया आपको, ठीक है, लेकिन ग्रीन जीडीपी के बाद मैं बोलूंगा अभी कार्बन, एक आया था प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो भी मेजर करता है। तो क्या कैसे सब कुछ सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है, ग्रोथ मतलब आपका मेजरमेंट कैसे हम सस्टेनेबिलिटी। और एक टर्म आया था जैसे ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू इकोनॉमी क्या है? फिशरीज को लेकर, मेरीन रिसोर्स को लेकर, उसको वो आ जाएगा अभी ब्लू इकोनॉमी, जो मेरीन रिसोर्स को लेकर। तो केयर इकोनॉमी अभी आएगा क्वेश्चन, अब केयर आएगा नहीं आया, केयर इकोनॉमी एक चीज चल रहा है, केयर इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, सुना है? हाँ, गेमिंग, कुछ क्रिएटिविटी सब आर्टिस्टिक जो हो रहा है सब, जैसे उसका कैसे हम प्रमोट करेंगे उस इकोनॉमी में। जैसे ये सब आपने बोला 3D इमेजिनेशन, गेमिंग, वो कार्टून्स, ये सब जो चल रहा है, एनिमेशन बेसिकली हो रहा है, तो इसको हम ये एक इकोनॉमी है देखो। और ये बहुत बड़ा सेक्टर प्ले कर सकता है, मतलब कि इकोनॉमी में ऐड कर रहा है। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, कोई सेलिब्रिटी को एंडोर्स करते हो, तो यू हैव टू पे मोर मनी। लेकिन कोई देखो वोडाफोन था, जो वोडाफोन का सब कार्टून एडवर्टाइज होता था, कार्टून बेस्ड, तो वहाँ कम पैसा में यू कैन एडवर्टाइज फॉर योर प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब क्या है? तो हम ये सब, एक तो चीज है कि वी कैन, हाउ कैन वी अचीव सस्टेनेबिलिटी सिंपल और विथ मिनिमल रिसोर्स कंजप्शन। इसलिए हमारा एक गोल है रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। प्रोडक्शन करो लेकिन रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, कंजप्शन करो वो भी रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन कंजप्शन क्या है? यू आर कंज्यूमिंग, बिकॉज ऑफ योर कंजप्शन अदर पार्टीज और समवन एल्स इज अफेक्टेड, दैट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन। यू आर प्रोड्यूसिंग, बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्शन अदर nearby environment, nearby population, nearby communities getting displaced, getting affected, getting somewhat problem, facing some problem. That is also not responsible production. This is a part of a sustainable development goal, responsible production and consumption. So ये हो गया टैक्सेशन सिस्टम पढ़ना है। ये देखो चैप्टर 17 मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में क्या पढ़ोगे? मनी, टाइप्स ऑफ मनी, मनी सप्लाई का मॉडर्न टाइप्स क्या है, M1, M2, M3, सब कुछ है। देखो तो है लिखा है, कुछ भी यहाँ लिखा है, तो ये लेकिन ये क्लियर नहीं हो जस्ट। लेकिन ये मत सोचो कि ये जो है वो ये सफिशिएंट, ये कुछ नहीं है। तो ये जस्ट एक बस डायग्राम, मतलब कि इमेज फॉर्मेट में आपको दिया है। M0, M1 ये सब टाइप्स क्या है वो बाद में देखेंगे। सेंट्रल बैंक कौन सा इंडिया में सेंट्रल बैंक? इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या? आरबीआई। आरबीआई तो उसका फॉर्मेशन, उसका रोल, और आरबीआई का मेन इंस्ट्रूमेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी, सॉरी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी कौन में, हु इज इंट्रोड्यूस अगर रेगुलेटिंग फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल कौन करता है? फिस्कल पॉलिसी को आरबीआई नहीं करता है क्या? तो कौन? ओ फिस्कल पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिस्कल गवर्नमेंट। आरबीआई भी एक गवर्नमेंट है, लेकिन आरबीआई जी इंडिपेंडेंट बॉडी ना, एक रेगुलेटरी बॉडी है। बैंकिंग को रेगुलेट कौन करता है? तो एक आरबीआई का अपना पॉलिसी है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी।
वो क्या क्यों करता है, क्या है वो आएगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, वो इन्फ्लेशन है उससे रिलेटेड। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत सारे जन धन योजना, ये सब स्कीम्स, बिजनेस करेस्पोंडेंट मॉडल। ओके, तो ये बैंकिंग चलेगा। फिर आएगा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। देखो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में क्या है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट। आप मत सोचो कि दोनों में मनी में मनी मार्केट में मनी होता है, कैपिटल तो मनी ही है। तो डिफरेंस क्या है फिर, कैपिटल इज ए लॉन्ग टर्म मार्केट, मनी मार्केट इज ए शॉर्ट टर्म मार्केट। जहां पर एक साल मैक्सिमम 1 ईयर के लिए ट्रांजैक्शन होता है, बोरोइंग लेंडिंग होता है वो 1 साल शॉर्ट टर्म के लिए, और 1 साल उसका ड्यूरेशन कितना होता है, 1 ईयर। 1 ईयर में अगर बोरोइंग एंड लेंडिंग होता है, टेक्स प्लेस, सिंपल पैसा ले रहे हो दे रहे हो 1 ईयर का अंदर में, तो दैट इज योर मनी मार्केट। इफ इट गोज बियॉन्ड दैट, इट इज ए कैपिटल मार्केट। तो ये तो एक डिफरेंस है। और भी एक डिफरेंस है, कैपिटल मार्केट में बेसिकली क्या क्या सेल करते हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शन होता है, शेयर्स, स्टॉक्स, जो कि स्टॉक मार्केट बोलते हैं सिंपल, और सिक्योरिटीज मार्केट इसको बोल सकते हो। कैपिटल मार्केट को आप सिक्योरिटीज मार्केट बोल सकते हो, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये एक्चुअली इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर है। दिस मार्केट्स इज नॉट ए फिजिकल मार्केट। ये मार्केट क्या होता है ना, दिस मार्केट एक्ट्स एज ए mechanism to borrow and lend, मतलब basically to borrow money or lend, borrowing and lending takes place. This is the market is a mechanism through which borrowing and lending takes place. यहाँ पर mobilization of resource mobilization होता है from safer, मतलब you have more money, you can invest, some from surplus to deficit areas में fund divert होता है, और कुछ नहीं। यहाँ पर एक फंड मोबिलाइजेशन का मार्केट है। लोगों के पास पैसा है, गवर्नमेंट विल टेक मनी फ्रॉम यू, गवर्नमेंट विल गिव मनी बैक, गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज, पब्लिक, गवर्नमेंट, बैंक्स, एवरी। सो ये बहुत सारा चीजें, यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स भी होता है। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स है, देखो शॉर्ट टर्म लिखा तो ये मनी मार्केट, यहाँ पर कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये इसका बात, एक्सटर्नल सेक्टर में ये आएगा, करेंट फॉरेन ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये सब टर्म्स आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन कौन करता है, मेंटेन मतलब उसका जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को मेंटेन कौन करता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फॉर एक्सटर्नल सेक्टर में बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा हुआ, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड को मेंटेन कौन करता है, हु कीप्स दिस रिकॉर्ड, पब्लिश करेगा, या जो रिकॉर्ड को, तो जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो अथॉरिटी है, जो हु इज अथराइज्ड टू मेंटेन दिस रिकॉर्ड, आरबीआई करता है इसको। तो आरबीआई, फॉरेन ट्रेड, ये सब ओके। फिर इसमें आता है फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेक्स क्या है, एक्सटर्नल डेप्ट क्या है। एक्सटर्नल डेप्ट का अंदर में बहुत सारा जाएगा, सॉवरेन बोरोइंग्स, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ओके, बहुत सारा बॉन्ड्स होता है, जैसे मसाला बॉन्ड, ये तो बहुत कुछ टर्म्स, मसाला बॉन्ड्स, ये सब आएगा। दीज आर मीन्स ऑफ बोरोइंग, और कुछ नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बोरोइंग। देन एफडीआई, एफआई कुछ है, इसमें हम देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट फॉरेनर करता है, कहाँ करेगा, इंडिया में करेगा फॉरेनर का, उसका कंट्री में करेगा, तो हम क्यों बोलेंगे एफडीआई। हमारा लिए कोई फॉरेनर आके अगर इन्वेस्ट करता है, हम उसको एफडीआई बोलते हैं। तो एफडीआई, एफआईआई, दीज आर सोर्स ऑफ योर कैपिटल। जो कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट होता है गवर्नमेंट में, करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, उसमें 2 अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में सिंपल गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो रिकॉर्ड है वो करंट अकाउंट में जाता है। लेकिन कोई आके अगर इन्वेस्ट करता है यहाँ पर, या आप जाके उधर इन्वेस्ट करते हो, तो मनी अगर उसमें इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, तो वो हो गया कैपिटल अकाउंट। तो उसको हम एफडीआई, एफआई का फॉर्म में देखते हैं। एफआई क्या है, एफडीआई क्या है, वो क्लास में बाद में देखेंगे, वो तो बहुत लेटर
लास्ट मतलब टुवर्ड्स द एंड में देखेंगे, वो सब एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट है, फिर जाएगा मनी बैंकिंग का कुछ इकोनॉमिक्स जाएगा जो कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, फिर आएगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ये सब देखेंगे। तो ठीक है, एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये भी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एसीजेड यूनिट सेटअप करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एसीजेड इंडिया का फर्स्ट एसीजेड कौन कहाँ पर है, और एसीजेड यूनिट फर्स्ट कहाँ पर सेटअप हुआ था, विच स्टेट एसीजेड यूनिट फर्स्ट इंडिया का एसीजेड हुआ था? कांडला, कांडला पोर्ट गुजरात। एक्चुअली कांडला क्या है, ये एसीजेड यूनिट, ये एक पोर्ट है गुजरात कांडला। तो कांडला गुजरात जो है ना, एसीजेड फर्स्ट यूनिट सेटअप हुआ था। एसीजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दीज आर ट्रीटेड एज स्पेशल टेरिटोरीज और स्पेशल एक्सपोर्ट यूनिट्स, यूनिट्स डिजाइंड टू प्रमोट एक्सपोर्ट। यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा वो एक्सपोर्ट के लिए होगा, ओके। और उसके उस एसीजेड यूनिट्स पे टैक्स नहीं लगता है, वो ट्रीटेड एज फॉरेन एनक्लेव विदिन द कंट्री, दैट ट्रीटेड एज ए फॉरेन टेरिटरी विदिन द कंट्री। देयर इज नो टैक्स लेविड ऑन दिस एसीजेड्स। ये था रूल, 2005 में आया था एसीजेड रूल एक्ट। तो ये बोला कि फर्स्ट 5 ईयर्स में 100% टैक्स एग्जेम्प्ट करेंगे, नेक्स्ट 5 ईयर्स में फिर हम करेंगे 50%, नेक्स्ट 5 ईयर्स में और 50 ऐसे करेंगे। लेकिन 2020 में जो कोरोना सिचुएशन था, कोरोना सिचुएशंस, तो उसके लिए इसको एक्सटेंड मिला था एसीजेड। लेकिन इसका नया फॉर्म भी आ रहा है, नेम चेंज हो गया, अब एसीजेड नहीं रहे, तो न्यू फॉर्म आ रहा है इसका। तो पहले था ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अगर देखोगे कंसेप्ट चाइना का है एसीजेड, लेकिन इंडिया का फर्स्ट ईपीजेड, ये ईपीजेड था इंडिया का, इंडिया में एसीजेड नहीं था, ईपीजेड था। उसको हमने एसीजेड रीनेम किया एसीजेड। तो लेकिन एसीजेड कंसेप्ट किसका है? कंसेप्ट इज गिवन बाय चाइना, 1972 में चाइना ने कंसेप्ट दिया था। लेकिन ईपीजेड हमारा 1950s में 60s एग्जैक्टली 19 ईपीजेड फर्स्ट कांडला में आया था 1964 या समथिंग, तो ये ईपीजेड आया था, ओके। तो ये सब चीज आप देखोगे, देखो 5 ईयर फर्स्ट, नेक्स्ट 5 ईयर्स ये सब है कांडला, ओके। नेक्स्ट थोड़ा ईयर हम देखेंगे नेक्स्ट में, तो अभी उसको फोकस मत करो कि कहाँ पर क्या हुआ था। मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है रिलेटेड टॉपिक्स? आई थिंक दिस इज द दिस मच टॉपिक, आई थिंक नेक्स्ट नहीं है। तो ये मेजर मेन टॉपिक्स है। देखो अगर मैं ओवरऑल बताता हूँ, आपको स्टार्टिंग करना है कहाँ से, अगर लिखा है तो ओके, नहीं लिखा है तो रिफ्रेश करके। तो फर्स्ट आपका जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो कि माइक्रो मैक्रो, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। फिर हम नेशनल इनकम में आएंगे, जहां पर हम फोकस करेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी। अगर नेशनल इनकम आप देखा होगा, नेशनल इनकम लिखा है कि नहीं, वहीं पर फाउंडेशन कॉन्सेप्ट में दे दिया था, ओके। To see चलो हाँ, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट इसी का अंदर में नेशनल, लेकिन ये एक चैप्टर है सच, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी और जी भी है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड जीडीपी डिफरेंस क्या है? हाँ, वो फिलिप्स कर्व, लाफर कर्व। फिलिप्स कर्व अनएम्प्लॉयमेंट में जाएगा, लाफर कर्व टैक्सेशन में जाएगा, फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट में शो करता है। बहुत सारा कर्व है, कुजनेट कर्व है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में जाएगा, साइमन कुजनेट दिया था। और भी कर्व है, वो सब इन्फ्लेशन और टॉपिक्स का अंदर में आ जाएगा, ठीक है। वो कुछ कर्व तो हम थोड़ी डिटेल्स, अभी जस्ट टॉपिक्स बता रहे हैं, ओके। उसका अंदर में क्या क्या है, बहुत कुछ व्हेन वी स्टार्ट द टॉपिक, ओके। तो एनीथिंग, सो ये नेशनल इनकम इंपोर्टेंट, यूनिट यूज जस्ट इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो प्री हिस्ट्री, सॉरी प्री ब्रिटिश, ड्यूरिंग ब्रिटिश, पोस्ट ब्रिटिश, क्या क्या इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी कैसे ट्रांजिशन हुआ है,
मुझे बताओ इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ उसमें व्हाट आर द जीडीपी रेट, ग्रोथ रेट कितना था? व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट और व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट द कंट्री, व्हाट वाज द जीडीपी रेट, ग्रोथ रेट कितना था? अभी कितना ग्रोथ रेट देखो. व्हाट आर द फॉरेन एक्सचेंज दैट टाइम, हाउ, जस्ट हैव ए कंपैरिजन. तो इंडिया, अच्छा बताओ ब्रिटिशर्स आने से पहले इंडिया कितना था? इंडिया का रिच था पुअर था? When before Britishers, advent of the Britishers, India was a rich or poor country? Poor country. इंडिया का जितना इनकम था, जितना जीडीपी था, पूरा यूरोप का जीडीपी उतना था. मतलब वर्ल्ड में अगर देखोगे 25% जीडीपी इंडिया का पास था. मतलब इंडिया वाज वेरी रिच, नॉट रिच, रिचर देन एनी कंट्री. आप देखोगे एंशिएंट सिविलाइजेशन, देखो इंडस वैली, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ये सब 3 जो सिविलाइजेशन है ना, दे आर वेरी रिच एंड एडवांस सिविलाइजेशन से. और इनका जो इनकम लेवल है बहुत हाई था. इनफैक्ट इंडिया का शेयर था वर्ल्ड का 23% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी. इंडिया का 22 पॉइंट समथिंग, 23 अप्रोक्सीमेटली लो. 23 में सोच लो पूरा वर्ल्ड में अगर 100 रुपया है, 25 रुपया इंडिया का पास था. मतलब शेयर, इंडिया का शेयर. तो इसका मतलब इंडिया इज वेरी रिच दैट टाइम. तो मनमोहन सिंह जब एक ब्रिटिश हिस्टोरियन, कैम्ब्रिज हिस्टोरियन अंगस मैडिसन बोलते हैं कि इंडिया जस्ट बिकेम, क्या हो गया था ना, काउ कैटल. इंडिया बिकेम द कैटल टू सर्व टू सेटिस्फाई इट्स मास्टर. और इंडिया सर्वेंट था और मास्टर था ब्रिटिशर्स. इंडिया इज एक्सप्लॉइटेड ओनली टू, जैसे कंडीशंस इंडिया क्या था, ओनली जैसे कैटल को काउ साइड में रखते हैं जो कंडीशन है, सेम इंडियंस वर केप्ट इन दैट कंडीशन. इंडिया इज रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ पॉवर्टी. इंडिया ब्राइटेस्ट ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन, इसको रेफर करते थे मनमोहन सिंह, ब्राइटेस्ट ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन. ब्रिटिश क्राउन में ब्राइटेस्ट ज्वेल है इंडिया था. पूरा ब्रिटिश का एम्पायर में ब्राइटेस्ट ज्वेल इंडिया. तो आप सोचो इंडिया वॉज वेरी रिच दैट टाइम बिफोर ब्रिटिशर्स केम. बट व्हेन ब्रिटिशर्स ruled over the country, how India what are the changes you witnessed during the British rule? क्या क्या हुआ चेंज, मेजर चेंजेस? इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है कि नहीं? नहीं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. आप बोल सकते हो दैट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ? ब्रिटिशर्स व्हेन दे केम, they tried to destroy the traditional industries. They tried to actually collapse your main जो इंडस्ट्रीज था आपका, क्या, कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री और स्पाइस. अब एग्रीकल्चर बेस्ड था वो. मेनली इंडिया वाज, व्हाई ब्रिटिशर्स अट्रैक्टेड टू इंडिया? बिकॉज ऑफ स्पाइस. Mainly they are coming for trade. They came for trade first. But once a trader become a ruler over the time, by taking the loopholes or by taking that opportunity, they became the ruler. But they came first as a trader. So when they traded, they saw that the affluent, the plenty opportunity or plenty resources available. There are plenty of resources available in India in terms of natural resource, raw materials. So they exported these raw materials from India to Britain to develop the Manchester. That is to develop the British industries. First, export of raw material to Britain, England, and importing the finished goods from England with high price, exporting the raw material with low price. So this became a double burden on the Indian people. You have to sell at low price, you have to buy at high price. You see the order. And raw material is yours, and only the brand name is theirs. You have to compulsorily buy them, and you cannot produce your own final good. You have to sell the raw material, and you have to only, because you need the shirt or the clothes, but only you have to sell the cotton, that fabric, that cotton
or what are the textile that raw materials you have to sell, silk and cotton. Now वर्ल्ड का जो सबसे अच्छा क्वालिटी का कॉटन कौन सा है, दैट इज अवेलेबल इन इंडिया ओनली. व्हाट यू आर सेइंग कि ये लुइस फिलिप और अदर ब्रांड्स वर टेलिंग फॉरेन ब्रांड, सबसे अच्छा क्वालिटी का कॉटन इंडिया में है. मुस्लिन कॉटन, मुस्लिम नहीं मुस्लिन, वो ढाका में मिलता है. ढाका जो कि प्रेजेंट डे में, अभी तो ढाका बांग्लादेश में, दैट टाइम ढाका बांग्लादेश पार्ट ऑफ बांग्लादेश क्या है, पाकिस्तान सब इंडिया का था. तो ढाका में मिलता है जो मुस्लिम कॉटन, फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड. जो आप पीटर अलेन सोली, पीटर इंग्लैंड, जो भी ब्रांड बोलो, फाइनेस्ट कॉटन इंडिया में ही मिलता है. तो उसको एक्सपोर्ट किया. ब्रिटिशर्स स्टार्ट टू एक्सपोर्ट दिस रॉ मटेरियल्स एंड ब्रॉट द फाइनल गुड्स विथ हाई प्राइस. तो एक जो बड़ा, और जो एग्रीकल्चर था, फूड क्रॉप, they converted this food crop to cash crop. They forced the cultivation of indigo cultivation for dyeing the clothes. Indigo cultivate karo. Different system policies, zamindari policies, they destroyed the condition. They actually, you can say, made the conditions of farmers very worse, or you can say what the conditions of farmer deteriorated during the rule. जमींदारी सिस्टम, जो भी पॉलिसीज आप हिस्ट्री में देखते हो, वो थोड़ा वो हिस्ट्री इकोनॉमिक, एक्चुअली वो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक था, और हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी का हिस्ट्री क्या है. तो इंडियन वो कुछ इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है और इसमें कुछ टेक्निकल चीज नहीं है, बट जस्ट नो कि कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर ब्रिटिश, ड्यूरिंग ब्रिटिश एंड पोस्ट ब्रिटिश. आई विल ऑल्सो गिव यू दैट सम कंटेंट रिलेटेड टू दिस, कुछ हम दे देंगे, विल डिस्कस, बट मैं जस्ट एक ओवरऑल बता रहा हूँ. ये था इंडिया का सिनेरियो. ट्रेड में क्या हुआ, आप वो ट्रेड में क्या करोगे, एक्सपोर्टर करोगे, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करोगे, फाइनल गुड. एग्रीकल्चर खत्म कर दिया, स्ट्रेट कॉटेज इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड. सो ये सब था इंडिया का लॉस. ड्यू टू दिस इंडिया बिकेम पुअर, एंड पुअर नहीं, इंडिया रिड्यूस्ड. जो 23 पॉइंट देख रहे हो ना, 23 पॉइंट समथिंग, 23% शेयर था जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी का शेयर इंडिया में कितना था, 23%. सपोज 20, अप्रोक्सीमेटली 22 पॉइंट समथिंग, 23% share. India was having 23% of world's GDP. Okay, and it reduced to just 1.1% when Britishers left the country. When Britishers left the country, India was having only 1.1% GDP. See, 23% GDP became just 1.1%. Then what you can say? That's why India is called brightest jewel in the British crown. It may be asked, India is called brightest jewel in the British crown. Justify the statement. It is not asked till now, but it may be asked. So what it refers to? Brightest jewel. Who is the brightest jewel? India. India became cattle farm. इंडिया बिकेम ए कैटल, क्या फॉर द ब्रिटिशर्स. कैटल को क्या यूज करते हो आप, जस्ट टू फॉर द पर्पस ऑफ फार्मर, द पर्सन हु कीप्स द काउज और बफेलोज, व्हाट, टू सैटिस्फाई देयर नीड. एंड काउज एंड बफेलोज आर केप्ट इन ए डिलैपिडेटेड कंडीशन, वेरी पुअर कंडीशन. उनका घर देखोगे, काउज बफेलो, बट यू गेट द बेनिफिट फ्रॉम देम, एक्सट्रैक्ट द रिसोर्स. उसको बोलते, उसी का लिखा थ्योरी ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसको एक्सटेंड किया थ्योरी ड्रेन ऑफ वेल्थ. हु रोट दिस थ्योरी? दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्ता. ये दोनों ड्रेन ऑफ वेल्थ लिखे, दोनों इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ, जो कि ड्रेन ऑफ वेल्थ एक्चुअली द बुक था जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो दादा भाई नौरोजी का था, लेकिन दोनों हाईलाइट किया ड्रेन ऑफ वेल्थ. ड्रेन ऑफ वेल्थ उसको हाईलाइट किया दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट का, फर्स्ट ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में फर्स्ट मेंबर है इंडियन टू रिप्रेजेंट द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स. हु इज द फर्स्ट पर्सन? दिस इज द फर्स्ट ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं. ब्रिटिश में जाके कि इंडियन, इंडिया को एक मतलब के लिए, और ब्रिटिश अगेंस्ट में बोल, दिस ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. ही रोट दिस थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. तो ये सारा चीज है कि हिस्टोरी ब्रिटिश रूल में और ब्रिटिशर्स का बाद, और ब्रिटिशर्स अभी क्या है इंडिया का पोजीशन.
इंडिया को कितना नंबर वर्ल्ड GDP टर्म्स नंबर ऑफ इन टर्म्स ऑफ GDP व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? 6th, 5th हो गया भाई, 4th तो 6th तो नहीं, 6th तो इट वाज 6th, नाउ 4th लार्जेस्ट हो रहा है ना, 5th लार्जेस्ट 4th लार्जेस्ट, अभी 6th, अभी 6th नहीं तो कितना पोजीशन? It has overtaken UK to become 5th largest. जापान को ओवरटेक किया 4th लार्जेस्ट. आप देखो कि जब 3rd लार्जेस्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रियल जीडीपी, नहीं नॉमिनल. नॉमिनल मतलब जो जीडीपी फिगर हम देख रहे हो, मार्क नॉमिनल जीडीपी डिफरेंट टाइप्स, नॉमिनल, रियल, बहुत सारे. तो इंडिया का जीडीपी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, लेकिन डेवलपमेंट में इंडिया उतना नहीं कर रहा है परफॉर्म. व्हाई? डेवलपमेंट वाइज इंडिया इज पोर in terms of क्यों डेवलपमेंट में कम हो रहा है? पॉपुलेशन, इनइक्वालिटी, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये सब के लिए इंडिया का रैंक डेवलपमेंट में कम है. और करप्शन, और ऑब्वियसली फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये अगर नहीं रहेगा तो आपका डेवलपमेंट यहाँ पर होगा. एजुकेशन, हेल्थ, इस सेक्टर को अगर आप प्रमोट नहीं करोगे तो डेवलपमेंट कम हो जाएगा. अब ग्रोथ होगा लेकिन डेवलपमेंट नहीं. अब बताओ फ्रांस जीडीपी में इंडिया का आगे है पीछे? इंडिया इज हेड ऑफ फ्रांस, बट फ्रांस का पर कैपिटा इनकम कितना है? $45,000, $44,000. इंडिया का पर कैपिटा इनकम कम है. क्यों है पर कैपिटा इनकम? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इज ए फैक्टर. आप पॉपुलेशन इज ए फैक्टर और नॉट? पॉपुलेशन क्या फैक्टर है? ये पॉपुलेशन डिस्काउंट्स द ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम. आपका कितना भी ग्रोथ हो, इफ यू हैव मोर पॉपुलेशन, इफ यू हैव हाई पॉपुलेशन, you have to spread that growth among the population. If you cannot tackle this demographic dividend, it will lead to demographic disaster. आपका demographic dividend है, India is having largest youth population in the world, है कि नहीं? Largest youth population कहाँ पर है इंडिया में? इंडिया largest youth population 15 to 64, एक्चुअली 15 to 64 को हम बोलते हैं वर्किंग एज ग्रुप. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है. लार्जेस्ट यूथ पीपुल इन द वर्ल्ड इंडिया. अगर इंडिया कैन नॉट हार्नेस, कैन नॉट मोबिलाइज दिस टैलेंटफुल, कैन नॉट यूटिलाइज देयर पोटेंशियल, कैन नॉट मेक देम स्किल, कैन नॉट मेक देम प्रोडक्टिव, देन व्हाट विल हैपन? इट विल लीड टू डेमोग्राफिक डिजास्टर. आउटकम क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा. जो आप देख रहे हो नक्सलाइट्स, करप्शन, सोशल अनरेस्ट, टेंशंस, सुसाइड, प्रोटेस्ट, मोब वायलेंस, गवर्नमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, डकैती हो रहा है, कोई भी नेगेटिव एक्टिविटीज स्टार्ट होगा. जब आप जॉब नहीं मिलेगा क्या करोगे? सिंपल वही बात हो रहा है कि डेमोग्राफिक डिजास्टर. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया का पास पूल है टैलेंट. तो पॉपुलेशन अच्छा है, गुड, बट पॉपुलेशन को हम क्या करना है? मैनेजिंग द पॉपुलेशन इज ए रिसोर्स फॉर द कंट्री, बट रिसोर्स को आपको मैनेज करना है. दैट इंक्लूसिव ग्रोथ करना है. टू मेक एवरी पर्सन, क्या करना है आपको? स्किल प्रोवाइड करना है, एजुकेशन देना है, मेक देम प्रोडक्टिविटी, मेक देम स्किल्ड. सो इंडिया क्या होगा? स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. अब देखो पूरा जो काम करता है फॉरेन में, कहीं भी दूसरा बाहर कंट्री में, तो इंडिया का लोग काम करते हैं. अब मिलेगा आपको इंडियंस, तो क्या हो रहा है? ड्रेन ऑफ वेल्थ हो, अभी ड्रेन ऑफ ब्रेन हो रहा है. पीपुल माइग्रेट फ्रॉम कंट्री टू अदर कंट्रीज, वाई? इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी, जॉब के लिए. तो उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, स्किल प्रोवाइड करोगे, दे विल फर्स्ट सर्व द कंट्री, दे विल वर्क विद इन द कंट्री, एंड सरप्लस लेबर जो रह जाएगा, सरप्लस लेबर कैन माइग्रेट और दे कैन, वी कैन, हम मैन पावर प्रोवाइड करेंगे. वी विल बी द स्किल कैपिटल, वी विल प्रोवाइड द स्किल्ड पीपल टू द आउटसाइड फॉरेन कंट्रीज. तो इट इज नॉट रॉन्ग टू गो एंड अब्रॉड एंड वर्क, प्रोवाइडेड कि आपके पास स्किल होना चाहिए. आपके पास हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल में यू शुड बी given properly, you should be provided, so that
आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। तो मेनली विल कवर मेजरली दिस 20 to 24, it may be extend to 3 more topics, but major topics are given okay here. So anything you want to ask, any doubt, any confusion till this? देखो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, अभी तो हम कुछ पढ़े, लेकिन आपका मन में अगर कुछ फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम योर क्या सोच रहे हो आप, सिंपल व्हाट यूर थिंकिंग, कुछ मन में चल रहा है तो यू कैन आस्क सिंपल, फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस, ट्राई टू आस्क, पार्टिसिपेट as much as, or you think you, if you ask many questions, it will reflect, it will develop your simple thought process, it will open your mind, it will be a reflective kind of study होगा, reflective study होगा, कि reflect होगा कि what you are studying, you are getting feedback mechanism होना चाहिए। feedback mechanism का मतलब two way process। अब मैं तो एक वन वे अप्रोच में बताऊंगा तो कुछ भूल भी सकता हूँ, आई कैन फॉरगेट समथिंग, आई कैन टेल समथिंग, यू आस्क द क्वेश्चन सो दैट वी कैन इन ए फ्लो, वी कैन मेंटेन द फ्लो। ओके, अगर देखो समथिंग सपोज आई स्किप, मैं चले जाऊंगा स्किप में, सोचूंगा अज्यूम कर लूंगा कि हो गया नेक्स्ट, या मैं भी स्पीड हो जाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, तो लेकिन आपका वो लिंकेज, बट यू डिड नॉट गेट दैट, सो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए आप उस स्टेप को समझाए कि नहीं, आपको इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट और नॉट, नेक्स्ट उसको ठीक है कि नहीं यार मैंने कुछ स्किप किया, तो यू कैन आस्क। तो समझ रहे हो कि नहीं, यू शुड बी इन द माई, मतलब ट्यून करना है कि मेरा साथ साथ में मुझे जो, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको कहीं पढ़ा कि कुछ नहीं, मैं अगर बता रहा हूँ कुछ, बट यू हैव स्टडीड फ्रॉम एनी बुक, एनी सोर्स, यू स्टडी एनीथिंग, यू आस्क कि ये पिताजी से पूछे, गुड क्वेश्चन, अभी तो मैं पढ़ा है लाफर कर्व, फिलिप्स कर्व, मैंने और एक कर्व बताया, कुछ कर्व, और भी कर्व भी है बहुत सारा, बट मैं ना स्लोली जब टॉपिक स्टार्ट करूँ उस समय बताऊंगा, बहुत सारा चीज़ जाता है। तब इकोनॉमिक्स का ये कुछ भी नहीं, दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स, दिस इज अ फॉर्मल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द टॉपिक ओनली। जीएस पेपर का इकोनॉमिक्स का टॉपिक क्या है, इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब स्टार्ट होगा तो फिर बहुत सारी चीज़ हमने टॉपिक वाइज विल गो, बट बिफोर दैट यू मेक श्योर यू स्टडी सम करंट अफेयर्स, करंट इवेंट, जैसे कोई, जैसे मैं बोला इंडिया का रैंक कितना है, अभी इंडिया का कैरेक्टरिस्टिक्स और पूछेंगे, प्रेजेंट क्या है, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी तो आपने बोला, एग्रेरियन इकोनॉमी है कि नहीं, फिर देखेंगे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज क्या चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज में प्रेजेंट कैपिटल, मतलब हमारा जो इनफ्लो है एफडीआई क्या है, रेट नहीं, कितना इनफ्लो हो रहा है एफडीआई में, हमारा क्या स्टेटस है, कौन सा सेक्टर में हम लोग ज़्यादा एफडीआई आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सा ये ट्यून अप करना है, जस्ट इट्स ए काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो आज मैंने बोला कि थोड़ा ओपन अप कर दिया, पूरा इकोनॉमी को सिलेबस ओपन किया बस। तो अभी आपको देखना है कि भाई आगे हम जाके हाउ वी कैन मैनेज दिस कोर्स, ठीक है। कोई डाउट है? मैंने अगर स्टार्टिंग करता हूँ, कुछ स्टार्टिंग नहीं, अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखता हूँ, बताओ इकोनॉमिक्स अनर्स आप पढ़े हो, व्हाट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, मैं पूरा बिल्कुल अभी स्टार्ट, अभी आप सोचोगे इकोनॉमिक्स क्या है बताओ, लेकिन कल लिखाऊंगा, पीपीटी दिखा दूंगा, अब इकोनॉमिक्स क्या है बताओ, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाई डू यू स्टडी इकोनॉमिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू स्टडी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स कहां से आता है, क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, सिंपल, थ्री थिंग्स, दैट्स व्हाई यू स्टडी इकोनॉमिक्स, थ्री थिंग्स अकर, आई टोल्ड द हिंट्स, तीन चीज होगा तो इकोनॉमिक्स आ जाएगा उसमें। तो फर्स्ट थिंग इज रिसोर्स, रिसोर्स क्या होगा, अनलिमिटेड है लिमिटेड, देखो स्टार्ट लिमिटेड। सेकंड क्या होगा, कंडीशन, रिसोर्स इज लिमिटेड बोला, सेकंड कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी ए वांट फॉर दैट रिसोर्स, वांट, वांट मींस नीड, नीड वांट डिमांड का अलग अलग डेफिनेशन, लेकिन हमने वांट फॉर द रिसोर्स, वांट्स आर अनलिमिटेड, यू नो, मैंने आपको सुना वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्स आर लिमिटेड, लेकिन रिसोर्स लिमिटेड, वांट्स आर देयर। आप बोलोगे देखो कैसे, थर्ड थिंग क्या होगा, कौन बताएगा, देखो रिसोर्स लिमिटेड, व्हाई डू यू स्टडी इकोनॉमिक्स, अगर पूछता है व्हाट इज नीड ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाई इकोनॉमिक्स कम्स इनटू पिक्चर, गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, आप ठीक बोला, हाउ यू यूज दैट रिसोर्स, तो इफेक्टिवली जो भी है, लेकिन हमने बोला कि तीन कंडीशन, रिसोर्सेस आर लिमिटेड,
wants are unlimited, or there is a want for that resource. My resource is limited, but I need this pen. Simple. I have money, I want to buy this pen. One pen is there. I have limited budget also. मतलब क्या है, उस पैसा में मैं इसको भी खरीद सकता हूँ, उसमें और I can buy a pen, I can buy some food, I can watch some, I can go do something with that money ना. बजट कंस्ट्रेंट होता है हमेशा. That is resource are limited, wants are unlimited. मेरा पास ऑप्शंस बहुत है करने के लिए, लेकिन मेरा रिसोर्स तो लिमिटेड है ना. ये हुआ. थर्ड थिंग क्या है, रिसोर्स कैन बी पुट इनटू अल्टरनेटिव यूजेस. जिस रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज है उस केस में इकोनॉमिक्स का पिक्चर होगा. समझ लो. मैंने ट्राई टू अंडरस्टैंड. रिसोर्स आर लिमिटेड, वांट मस्ट बी देयर फॉर दैट रिसोर्स, और वांट्स आर देयर, एंड रिसोर्स कैन बी पुट इनटू अल्टरनेटिव यूजेस. मतलब क्या है, देयर आर अल्टरनेटिव यूजेस फॉर दैट रिसोर्स. इफ देयर इज ए सिंगल यूज ऑफ दैट रिसोर्स, देयर इज नो इकोनॉमिक्स. If there is no want for that resource, there is no economics. If the unlimited resource, there is no economics. Tell example. Water diamond paradox starts from this. Which is more essential in your life? Water or diamond? Water is. Diamond is not essential. Not essential. Diamond is not essential. Na? Diamond is not essential. Essential पूछ रहा हूँ, luxury नहीं. Essential. Diamond is not essential. Then why do people pay more price to diamond? और diamond का price देखोगे very very high compared to water. Why diamond price is very high compared to water? Availability. Availability. Want is there. Luxury want is there. This is not necessary, but luxury want is there. Again, that is up. Price is high because of availability. सो ये हो गया रिसोर्स का अनलिमिटेड. देखो वाटर, जिस दिन प्रीवियस यू गो बैक टू 20, 30, 40 years बैक, देयर इज नो बॉटल्ड वाटर. नो बडी पेज द प्राइस फॉर वाटर. नाउ यू आर पेइंग प्राइस फॉर द वाटर और नॉट. वाई यू आर पेइंग प्राइस फॉर वाटर? बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर स्केयरसिटी हो गया. देयर इज ए स्केयरसिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर. देयर इज नो स्केयरसिटी फॉर सी वाटर. यू गो एंड बैथ द सी ओशन, कोई पैसा नहीं लेगा आपसे. Nobody takes money for bathing in the, or taking deep in the ocean. But why you buy bottled water, drink one bottled water, you have to pay the price because drinking water is, fresh water is limited now because of underground कोई हो रहा है मतलब प्रॉपर जो वाटर का डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, या वाटर का सटेज जो ग्राउंड लेवल कम हो रहा है, स्लोली गोइंग डाउन. वाटर हम हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं. ड्रिप वाटर इधर फ्रोजन फॉर्म है, उसको तो हम ड्रिंकिंग नहीं कर पाएंगे. फ्रोजन फॉर्म आइस कैप्ड है. तो बताओ वाटर डायमंड पैराडॉक्स में मैंने बोला वाटर डायमंड पैराडॉक्स. नॉर्मली आप सोचो, मुझे अगर ये नेसेसरी है, इसको तो मुझे ज्यादा प्राइस देना होगा ना भाई. सिंपल बात. जिसको जरूरत है हम उसमें प्राइस नहीं देते हैं, जो जरूरत नहीं उसको प्राइस देते हैं. डायमंड, विदाउट डायमंड यू कैन लिव, बट अब डायमंड के लिए 1 crore देने के लिए रेडी है. दे रहे हो कि नहीं? विदाउट डायमंड यू कैन लिव और नॉट, बट स्टिल यू आर पेइंग हाई प्राइस. वाई? एक तो लग्जरी गुड है और अवेलेबिलिटी कम है, बहुत स्केयरसिटी इसका हो गया. वही देखो ओपेक कंट्रीज में जहां ऑयल प्रोड्यूस होता है, वहां ऑयल का कुछ वैल्यू नहीं है. दे नीड वाटर. फॉर देम वाटर इज वेरी एसेंशियल एंड दे पे मोर प्राइस फॉर द वाटर. बट सी इन इंडिया, ऑयल, पेट्रोल we need is there and we are paying more price compared to water. वाटर का तो कोई प्राइस नहीं, सो नेग्लिजिबल प्राइस है. फ्रेश वाटर अगर वो क्या है, फिल्टर्ड वाटर है तो हम प्राइस देते हैं. लेकिन तो 3 चीज है तो इकोनॉमिक्स आता है. क्या 3 चीज? रिसोर्स आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड रिसोर्स कैन बी पुट इनटू अल्टरनेटिव यूजेस. देयर आर सेवरल यूजेस फॉर द रिसोर्स. That is called scarcity. So here Lionel Robbins 1932 defined economics from the scarcity point of view. Scarcity definition आया. तो फर्स्ट इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कौन किया था? हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, लेकिन कोई इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स क्या है. फिर हम जैसे नेशनल इनकम जाएंगे, वहां से कोर यूपीएससी के एंगल में जाएगा. लेकिन इकोनॉमिक्स माइक्रो क्या है, मैक्रो, जीडीपी, सॉरी, और जो सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मार्केट, कमांड, इकोनॉमी सब कुछ आता है मिक्स होके. लेकिन हम बिगिनिंग में डेफिनेशंस को समझते हैं,
Try to understand what is economics. Why do we study economics? Because of three things. Suppose you take economics as an optional paper, they might ask you any question. Economics optional तो छोड़ leave it. So simple economics क्यों पढ़ते हो? You should know. Being a functional literate, being a civil service क्या require करता है? You should be a generalist. मतलब you should be a functional literate. Functional literate का मतलब you should have knowledge over everything. What is the principle, what is the mechanism? क्या everything you should know, but you are not a master of anything. You are not expert of economics. You are not expert of any subject, but you should know कि ये इकोनॉमिक्स का ये है प्रिंसिपल. व्हाई इकोनॉमिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स ऐसे नहीं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं एज ए सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ थ्री थिंग्स, थ्री स्कैरसिटी. इसलिए फ्रॉम दिस स्कैरसिटी यू कैन से व्हाट इज इकोनॉमिक गुड, व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक गुड. फ्रॉम द डेफिनेशन यू कैन डिफाइन व्हाट इज इकोनॉमिक गुड, व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक गुड. बताओ कौन सा इकोनॉमिक गुड है, सिंपल आपका भाषा में बताओ. इकोनॉमिक गुड का एक एग्जाम्पल दो भाई. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक गुड. सिंपल. गुड मतलब कमोडिटी. मैं अभी बता रहा हूँ इकोनॉमिक कमोडिटी का एक एग्जाम्पल दो. तुम बताओ एक एग्जाम्पल दो. कम ऑन वेरी फास्ट. कोई नहीं एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल दे दो. पेन, कोई भी, टेबल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पेपर, बुक, एवरीथिंग इज इकोनॉमिक कमोडिटी. Then everything is economic. What is a non-economic commodity? Why air? Because you are not paying any price. That means economic commodity किसको बोलोगे? Where you are paying the price. अब price क्यों दे रहे हो? Shortage is there, want is there, alternative uses is there. ठीक है. तो अब ऐसा देखो जहां पर shortage नहीं है, रिसोर्स भी लिमिटेड है, लेकिन वांट नहीं है, वो इकोनॉमिक्स वहां पर. इज देयर एनी स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स? नो. इफ देयर इज नो वांट, नो इकोनॉमिक्स. अब बताओ, एक एग्जांपल दे रहा हूं. जैसे डॉग का भी मीट होता है कि नहीं भाई? डॉग मीट जानते हो कि नहीं? डॉग आप बोलोगे मीट, तो डॉग मीट होता है कि नहीं? नागालैंड में लोग खाते हैं. दे पे द प्राइस फॉर दैट. बट हियर फॉर एग्जाम्पल यू टेक द फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा इकोनॉमी. डॉग्स तो घूमते हैं, nobody pays the price for, there is no economics for dog meat. It is not economic commodity for Odisha or any other parts. लेकिन अगर नागालैंड चले जाओगे, कहीं नॉर्थ ईस्ट, नॉट स्पेशली नागालैंड, डॉग मीट इज इकोनॉमिक कमोडिटी. तो इसमें जहां पर वांट नहीं है, डॉग ऐसा नहीं कि डॉग मीट, डॉग्स आर अवेलेबल प्लेंटिली, डॉग्स आर देयर स्कैरसिटी. पर यहाँ पर लेकिन वही चिकन, मटन खाते हो कि नहीं? मटन, वो मटन हो जाएगा तो चिकन भाई प्राइस दे रहे हो. सो सिंपल. इफ यू वांट, देयर इज ए वांट, देन ओनली इकोनॉमिक्स. देयर इज नो वांट समथिंग, कुछ चीज, कुछ फ्लावर्स है, कुछ फ्रूट्स है, वो जंगल में होता है, रेयर होता है, रेयर, बट पीपल डोंट वांट दैट. सो देयर इज नो इकोनॉमिक्स. सिंपल वांट मस्ट बी देयर. याद रखो, वांट मस्ट बी देयर, देन ओनली इकोनॉमिक थिंग्स विल हैपन. So water diamond products, okay. So who started economics first as a discipline? आदम स्मिथ को फादर बोलते हैं क्योंकि, बट ही डिड नॉट स्टार्ट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक सिस्टम को स्टार्ट नहीं किए थे. सिस्टम तो कौटिल्य अर्थशास्त्र भी इकोनॉमिक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र तो इकोनॉमिक्स इटसेल्फ. तो हम कौटिल्य को फादर नहीं बोलते क्योंकि nobody has studied a particular academic discipline by गिविंग सम थ्योरीज. जो आदमी थ्योरीज कुछ डेवलप करता है उसको हम फादर बोल देते हैं. वो एकेडमिक डिसिप्लिन वहीं से स्टार्ट, वहां से स्टार्ट होता है. इफ ए सब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम सम थ्योरीज, वी से कुछ थ्योरीज प्रिंसिपल दिया. वेल्थ ऑफ साइंस, साइंस ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है साइंस ऑफ वेल्थ से. इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है साइंस ऑफ वेल्थ. साइंस ऑफ वेल्थ किसका थ्योरी था? हु गेव दिस थ्योरी, साइंस ऑफ वेल्थ? साइंस ऑफ वेल्थ इज गिवन बाय हुम? आदम. क्यों? वेल्थ थ्योरी किसका था? मैं अगर बताऊं, देखो मैं अभी स्टार्टिंग से अब जस्ट बता रहा हूं, लेकिन आपको मैं फिर दिखाऊं बाद में. हु स्टार्टेड द डिसिप्लिन? आदम स्मिथ. 1776, 1776. ए बुक पूछता है एग्जाम में, who wrote a book? What is the book name? What is the name of that book written by Adam Smith, which highlights or which is the
regarded as the starting point of economics as a discipline, मतलब subject, not as a practice. इकोनॉमिक्स बाइंग एंड ट्रेडिंग, बाइंग होगा, सेलिंग होगा, ट्रेडिंग होगा, कुछ चीज बाइंग एंड सेलिंग ट्रेडिंग होगा, बैटर सिस्टम में होगा, फिर भी इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज स्टार्टेड when civilization started, but economics as a subject started very of late in 1776, late 1870s. तो ये कब स्टार्ट होता है? with the work of Adam Smith's work, an inquiry into the nature and causes of wealth of nation, or simple called wealth of nation. Wealth of nation is given by whom? Wealth of nation is written by whom? Wealth of nation. भैया wealth of nation theory very important. Wealth of nation. Wealth of nation is given by whom? Which? Wealth of nation. Wealth of nation theory is given by whom? Wealth of nation. Wealth of nation is given by Adam Smith. अगर देखो दिख रहा है कि नहीं? Wealth of nation. Wealth, simple theory, wealth of nation. This theory or this book is written by Adam Smith. Wealth of nation. मैं बताऊंगा आपको. Wealth of nation. That full name is An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation. 1776. ये जो book है, this book was published in 1776. तो यहाँ पर 2 questions. Any exams अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी मैच द फॉलोइंग आ सकता है. बुक्स एंड ऑथर्स, वेल्थ ऑफ नेशन. अगर क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेगा तो मैच द फॉलोइंग. डायरेक्ट देगा तो हु रोट दिस बुक, हु रोट द बुक, हु रोट द बुक कॉल्ड वेल्थ ऑफ नेशन, रिटन बाय. ठीक है सर. हम करें नेक्स्ट टाइम, फर्स्ट क्लास. କାଲିଠୁ ସକାଳୁ ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ. ଓକେ, ତାଙ୍କର ସକାଳ ସାର୍ ଆମର 8ଟାରୁ 10:30. ଆମର କେତେବେଳେ ତୁମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଗଲେ ହବନି? ହଁ ହବନି. 10ଟା ବେଳେ, 10ଟା ଯାଏ ତମର ଯେଉଁ 10ଟା ସେସନ୍ଟା. नाइन टू सिक्स. प्रोब्लेम होची एठी पिला भी बाहर दिए आसुनी. हम घरे कॉल करथिले. तुमके भी बॉस मिली जोटी. हां तो काली से कथा हम कहतिले किसी सार ऑप्शन जो सकाळू कंटीन्यूअसली तमरा क्लास रही थांता एंड इवनिंग रे हमर मेल पिलाकर क्लास रहिबो. आउ टिके यदि कहबे शीघ्र कर दबा. 7:30 रु नहले करिवा. 4 टिके सुनो. हां इवनिंग 5टा रु. इवनिंग 5 रु 7:30. हां हाँ हाँ, मु कथा होचे मेसेज.